लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कनेक्टिविटी इशू की वजह से खालिद वलीद साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, जिसके लिए अब माजरत ख़्वाह हैं। लेकिन अब मैं दावत देती हूँ बैरिस्टर मोहम्मद असगर ख़ान साहब को कि प्लीज़ वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और प्रेजेंट करें अपना पेपर, जिसका टॉपिक है लेजिस्लेटिव टूल्स टू कर्ब इलीगल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। प्लीज़ वेलकम बैरिस्टर मोहम्मद असगर ख़ान साहब। Thank you, Ji. Jazakallah. So before I am a barrister. I was electrical engineer, so I'm one of your category and the cadre, but I then left the field, not entirely, but then I journeyed into law, and that's what I am practicing. And I have about 2 decades of corporate experience in the energy field as well. So I'm not totally disconnected with my first degree. So today's topic, we would start with the illegal abstraction of the electricity. So that's what the topic is. We have basically 4 different laws. Some are soft and some are very hard. So we would look at the consumer service manual. If we can flip the slide. ये slide को आगे move करेंगे. So we have the Consumer Service Manual of 2021 of the NEPRA. Then we have the Electricity Act, Pakistan Penal Code, and Code of Criminal Procedure. Now these 2 laws, the last one, they are the really hardcore criminal laws. And I think we surveyed the US jurisdiction, the UK jurisdiction, the Indian law, and you will not find any comparison. And fortunately or unfortunately, I was the author of these 2 enactments, which we did in 2014-15, first through an ordinance and then through the Act of Parliament in 2016, and you find it on the statute books. Moving on to the soft law, Consumer Service Manual, which is basically a sort of a code, a best practice for all the distribution companies to follow. Next. Now this is the scope of the manual, and it would go into the language of illegal abstraction, theft of electric power, to which I do not agree really, because abstraction, the word abstraction in itself means to extract something with a view to injure somebody. So illegal abstraction is a sort of a misnomer, but nevertheless we have used it in our legislation and we continue to bank on it. Next slide. So over here, if we look at the Consumer Service Manual, we are directly relying on the Pakistan Penal Code, and this is what the language is in PPC. So it's in the PPC. The Consumer Service Manual takes cue on it, relies on it, and then it says that how it can be detected and a case registered with the law enforcement agencies. And this is the reference, and it creates a sort of a connectivity between your civil liability and a criminal liability. And there was a lot of debate during the parliamentary enactments in which Tahir Basharat Chima Sahab was also a very active part. And the question was whether we should have a tribunal, a separate tribunal for the taking cognizance of the theft, or should it be delegated to the Court of Sessions and the civil courts. And by the end of the day, upon the opinion of the Law and Justice Division, we had given that power to the Court of Sessions. So district and sessions judge was the competent authority before whom a complaint for theft of electricity was to be lodged, and it was not to be less than officer of grade 17 of a distribution company. So this was a sort of a check and balance mechanism, so that there are the responsibility of a gazetted officer of a distribution company who would lodge a complaint.
Now, prior to that, we have a very ancient, now about a century, more than a century, that we have a piece of legislation of Electricity Act 1910, which is wholly inadequate. And it takes care of these theft of electricity in section 36 and newly inserted 36A. Again, it deals largely with the abstraction, illegal abstraction and theft of the electricity cases. But the issue with that particular legislation is, A, it is too much outdated. So we had recommended to the federal government that although you have a NEPRA Act, which is a sort of a regulatory act, you do not have a federal executive act under which you can exercise all those powers. So in India, you can see they have the Electricity Act 2003. And rest of the US and the UK jurisdiction, they do have a sort of a differentiated, regulated, and a federal executive act, which does not happen in Pakistan. The only act that we rely upon is either we tweak with the NEPRA Act or we tweak with the 1910 Act, which is in some ways still alive. Now again, we have inserted certain provisions within the Electricity Act trying to criminalize these actions, but they were struck down by the court because this was a pure civil legal instrument. And that's why we had to transit towards the Pakistan Penal Code and the Criminal Procedure Code for the punishments and for taking cognizance of the offenses. So this is basically same section 30 of the so we will skip with that. Now, this is a special section that we inserted, and that was section 17B. The entire new chapter was brought in the Pakistan Penal Code. So this is a self-sufficient, adequate in our contention at that point of time. It gave a definition. So most of the definitions are consistent with the NEPRA Act. And then we placed a new definition of tampering so that there is no ambiguity about that. And then rest of the definition you can see, although you will have to have a microscope to analyze that, but nevertheless it's largely consistent with the industry norm and with the regulatory act. Now, these are initially, we took two main activities. One was the transmission and the other was the distribution. And we, as you would see, I don't know how much of you have a legal background, but the first question, and unfortunately what happens is, I think I just saw the demonstration of a video in which quite a few theft cases were seen. The issue comes when there is a lack of connectivity between what your technical team does on the field and when you bring it before the court of law. So you have got all the relevant software and the hardware. So you have got all the laws. You have got the criminalization of them. You catch the people red-handed. But when you register the complaint or FIR, which is the starting point, I think it's not very well drafted. Number one, because the police that we have in Pakistan, they are not learned in these technical issues. So there is a lot of oversight in the drafting of the complaint and in the collection of the evidence. Now, when there is a lack of connectivity between your technical issues and with the legal judicial issues, then obviously the case is bound to be failing at a first instance or subsequently. So we have, I think, envisaged each and every scenario where you dishonestly tap or consume electricity without passing through the electricity meter or making any illegal abstraction. So we conjured each and every scenario, what we can envision, kept it very broad so that we are not restricted in our prosecution. So I've not seen any new measure that would not be covered by these particular provisions of the Act. And everywhere, to keep the judicial prudence and jurisprudence in mind,
we kept the fact that the purpose of that abstraction was the theft of electric power and disrupting the supply of electric power or illegal transmission. So over here it's transmission, we have replicated for the distribution as well. So the crux of the matter is, A, you will have to catch a person, which is the actual catching red-handed or otherwise, or gathering a material for that, and then you have to prove the intention that he was doing for the purpose of the theft of the electricity, and this is where the problem lies. And this is where there is a disconnectivity between what actual good work you are doing and what does not translate into the successful prosecutions. So that's a gray area. And despite the fact that we have brought in Sessions Court, we have authorized officer of grade 17 in a distribution company to file a complaint, and with a harsh penalties of 10 million or a 3 to 5 year rigorous imprisonment, which we did in the CRPC, that sort of a result is not coming through, and that is because of the fact that our persons are not legally trained and our lawyers are not legally trained from the technical perspective to translate into a prosecutable offense. So that's a sort of a weak area. So again, the same provisions, it's to do with the distribution or the auxiliary. Now, if we look at all of these, the issue is not with the law. The issue is with the enforcement and making a case out of it. I have not seen, although there have been a registration of many FIRs, but at the High Court level and at the Supreme Court level, I haven't seen any sort of established ratio on these particular provisions of law. So I have also, I mean on the behalf of the prosecution or the defendant otherwise, we then take many digs at the complaint that has been filed. So it has to be, number one, the action or the actus rea. So the actual action should be there, and then you will have to prove that there was an intent to defraud the public and to abstract the electricity illegally. So again, as we move from the transmission to distribution, then we divided into the various categories: industrial, commercial, agricultural. And then on the residential side, we kept it, the penalties were very meager, so that there is a least harassment of the residential consumers. And on the industrial or commercial, where the stakes are very high, so the penalties were proportionately high. Again, we brought in some white collar sort of ingredient into that, and where it is a much more concealed effort by the evader or by the thief to get rid of the charges applicable to them. So we also included that they are tampering in a manner that the electricity tariff is reduced or not applicable, or in a mode which is not intended by the distribution company. And mind you, the fact that we had a presentation from the LESCO chief, so in an established area, but this law is also applicable as far as the CESCO and TESCO, where it is impossible, A, to read through the law, to interpret it, and then to file a complaint. So we don't have to see in a microscopic manner that it's a very valid piece of legislation, maybe in the LESCO area, where obviously you have the urban population, but this is also applicable into the far reaches district of the Quetta, Balochistan, tribal areas, Hyderabad, rural Sindh. So we had to frame a law which would be applicable to all sort of consumer categories.
abstraction from the tube wells, industrial load, etc., etc. So the law has to be uniform in its application. So these are different sort of a scenario that we had built in a law. And this is unprecedented. Even if you look at the advanced countries like US, or for that matter, if we look at the European jurisdiction, you will not find such sort of a law. That is unfortunate. Being a student of law mostly I've done my law degrees from abroad, what we need to have is a clear-cut law with a minimum scope, but then a very rigorous enforcement of that. And I'll quote you Section 68 from the Theft Act of UK. Before that, as I said, we need to had a senior court, and that was the courts of sessions. So district and sessions judge was the competent court. So although I see much of the cases on the civil side, I do not find such a criminalization, as you would say, that bearing any fruit, that obviously you take cognizance to the sessions court, and then it is going up to the High Court and Supreme Court of Pakistan. As I said, I don't find any great established case law on these particular provisions. So we are handicapped. They are not really tested in last about a decade, which is a fairly long time for any piece of legislation to come through. Now this has been given an overriding effect. So whenever a law is made, it is given an overriding effect. So another law comes in, it will give an overriding effect. So there is a conflict of law issues. There are much of law issues and lot of work for the lawyers to do to pick up the ambiguities in the provisioning of the law. Now these are the punishment that we are looking at, and these are very serious punishments. Criminal Procedure Code. We had made a schedule in the Criminal Procedure Code. So this is the first time on a statute book that we had made these punishments. And they are, number one, non-bailable. So again, it's a very harsh penalty that I must confess. And the second is it's non-compoundable. Compoundable means if there is a money penalty to it, so you pay the penalty and you get free from that. For example, in the NAB law, you have a plea bargain. So that's not available over here. If you are caught, you will face the full wrath of the law, or the long arm of the law, in that sense, that you will have to pay the penalty and you will undergo the imprisonment. And these are the various, from 462H to M, we have laid out the nature of the offense, the bailability of the offense, and how much civil and the criminal penalty you are going to face. Now this is a real harsh law to which I do not agree to 100% extent because of the abuse of the law that takes place in Pakistan. And then the consumers are left at the mercy, and that's why we do not see much of a registration on the criminal side and success at the criminal side. So, as we move on, as I said, from the international jurisprudence, we will give you some examples. So we have the UK Theft Act, 1968. We have a Code of District Columbia, US, Ohio Code of Ordinance, because in the US, it's all not federal, it's a state law. And then we have the Electricity Act 2003. Now look at the language of 1968 Theft Act. It's not specialized, and it's very, very sort of a large scope. But then they do the homework very properly, and they establish the necessary ingredients and get the conviction.
So it only uses a person who dishonestly uses without due authority or dishonestly causes to be wasted or diverted any electricity shall on conviction or indictment be liable to imprisonment. So that's a very simple two-liner which is applicable since 1968. And there is a whole lot of jurisprudence on what dishonesty means and what do you mean by the diversion and abstraction. So the piece of legislation should be leaner, smarter, but then its applicability should be fully tested and made in accordance with the law. The problem with us is that we have multiple laws. We have the CSM, we have the Electricity Act, we have the Electrical Inspector, then we have the Court of Sessions. You have the multiple availability of remedies, but by the end of the day, the case fails because we are not properly prepared, and our lawyers, they are not relevant to the field. So they would not know what would mean a sort of a metering system that is in place and what illegal abstraction has taken place. So that's the disconnect that we have to plug in if we are to be successful. Now, this is the US legislation. Now, again, they are focusing on the fact that A, it has happened, illegal abstraction has happened, and there is this conduct amounts to the theft. So they have made an absolute liability offense. So they are not required to prove. So if they get hold of a meter or an instrument of a theft, so that would by in itself establish that he was there to have the theft of the electricity. So they have made the law very simple. They do not go into the intention business. If they catch you, they will produce that evidence, and that will assume that you had the necessary mental state to commit that theft, and you get a conviction for that. So as I said, we have the two jurisdictions that we are looking at. This is another from the District of Columbia. So again, it's an absolute offense over there. In Pakistan, we are following the UK law, and over there we have to establish the mental intent, which is a very difficult job for us. And these are the penalties for violation. So they have based their penalties based on your clean record, number one. That would mitigate your sentence, but if you are caught second time, then there is a harsher sentence. So they have basically a graduation of the convictions. And this is India. So more or less same culture as Tahir Saab pointed out, same background, and with a large writing of English. They try to cover each and everything: tampering, use of electricity, damage, destruction. It's a whole enactment of linguistic niceties, which by the end of the day, to my mind, it doesn't help before the court of the law, unless, number one, you have the proper evidence, you have framed the charge properly, and you have the witnesses for that. And they have bifurcated, so if there is a load up to 10 kilowatt, then it's a different penalty, and if it exceeds 10 kilowatt, then obviously the fine is more than 6 times of the evaded amount. Now practically, this is the whole frame that we are looking at. But as I said, I think Pakistan gives you a whole lot of laws to enforce, but the question is, by the end of the day, how well it is presented in the court of law. Now, if you are not able to prove one of the elements of the crime, then obviously you are not going to succeed. And that's why our legislation fails at that point of time, that it is one of the most extensive legislation that we have drafted in any jurisdiction.
and we have made it part of the criminal statute books, Pakistan Penal Code and Criminal Procedure Code, yet the intended effects are not coming through. Now that is because of the fact that before the court of law, the standards of proof, the evidence that are different, there are procedures of the natural justice that you will have to establish. So my submission to the entirety of the workshop or the seminar as it is that you have got the law, you have got the criminalization, you have got the civil liability. The only question is how well you present the case before the Court of Sessions in this case. That's what we are focusing on. And how much conviction does it result by the end of the day? And by the end of the day, how much are upheld by the High Courts and the Supreme Court of Pakistan? Now for all those issues, already the CEO Lesko has highlighted a number of measures. You will need to have a stakeholder interaction. For me, as a lawyer, as a barrister, I tend to go on each and every cause of action before the regulatory authority, before the electrical inspector. Even in my own cases, I do not let go. But the social upbringing should be such that we should question each and everything. So if there is a family, then the son and daughter should first question the leader of the house, father, or whosoever it is, that why we are doing this. So unless it is embedded in your national character to question, and I think the electrical engineers or the engineers by that profession, I like, because somebody told me that why would you enter into law? The first training that I get into as an engineer is to question and to go for rationality, go for analysis. So that helps me in my legal background as well, that I structure myself, I question myself. And you should also groom your future generations to question you. So once that question and answer sessions begin at your home, then obviously all things fall in place. I remember a case law in US jurisdiction. there was a shoe bomber, and he would mail from a secret location bombs to the US State Department, and they would not able to trace it because that was some rural area. And the daughter of that gentleman came forward, and she gave a witness in the court of law that this is my father and he is doing this thing. So that's the sort of morality and the character that we have to build, that we make these laws enforceable in Pakistan. Otherwise, I can take the horse to the water but cannot make it drink. With that, I come to the end of my short presentation. And any questions, I would be happy to answer from the audience. Do question me that whatever I've spoken, does it sound? Sir, any question for Barrister Saab? Yes. So one of the question was that where do we go from here? Now, number one is that we have to have a public awareness campaigns, number one, so that's number one. Number two, again, I said, go to the educational institutions, train your future generation to question you. Because if they sidestep or keep their eyes blinded, then obviously they are not going to question you, or they are not going to pass that information. So number one, awareness campaign, community engagement, then you have the awareness programs, you have the advertisement drives. I think one of the major tools in the West that I've seen is, and a part of my MBA program as well, whenever you will advertise your efforts and you will show the deterrence, it will yield the impact on that. So you need to have a more community-based interaction with the people so that they come forward and they voluntarily give up. And the second issue is your tariffs need to be on the lower side to reduce the theft. Whenever your tariff is going to be like 40, 50 rupees, then obviously you have the incentive to go for theft and alternative methods of abstraction. So the first thing is bring it commercially down, ethically and socially interact with the community, and go into an interactive mode. On that, the regulator, NEPRA itself,
it has the powers to create consumer associations. Now, I haven't seen, if you go to America, if there is a single measure taken by the distribution company or by the regulator, there are hundreds of people filing a suit against the distribution company and the regulator as well, and then they end up in a settlement. I hardly see any vocal voice before the regulatory authority challenging any of the actions. So that is the level of the intelligentsia who should not be selfish, who should rise above their own self and work for the community. So that's the message from this, that work beyond yourself, look around. If there is some theft going on, report it to the consumer and follow it through. So that's my suggestion for that. Thank you very much. Thank you very much, Barrister Mohammad Asghar Khan Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया. I have another information for all of you guys. Mr. Amjad Ali, GM NTDC, अपनी किसी कमिटमेंट्स की वजह से आज यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन इनकी नुमाइंदगी के लिए मैं दावत दूंगी एक ऐसी प्रोफेशनल शख्सियत को जिन्होंने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में मयार, बेहतरी और पायदारी के असूलों को तरजीह बनाए रखा. ये वो नाम है जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स की बेहतरी, बैनुल-अक़वामी मयार के नफाज और फ्यूचर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की राह मुतय्यन कर रहा है. जनाब आतिफ शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक़ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से है, जो डायरेक्टर स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन के अहम ओहदा पर फाइज हैं. अपनी गैर मामूली बसीरत, तकनीकी महारत और पॉलिसी साज तजुर्बे से इस शोबे में आला मयार की ज़मानत बन चुके हैं. प्लीज़ वेलकम आतिफ शहजाद साहब. प्लीज़ प्रेजेंट योर पेपर. पॉइंटर ये हो गया. थैंक यू. उसका पिछला बटन पीछे वाले करने के लिए. ठीक, इसमें प्रेस टिक करें, दोबारा क्लिक करें. चलो स्टार्ट. इसी साइड खाली है. Okay. Honorable guests, respected professionals, energy experts, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very warm welcome. Ladies and gentlemen, that's my brief introduction. I have been working in Department of NGC and S&S. I have been director over there. Lastly, I have worked in Alternative Energy Development Board as a director, net metering and solar, Ministry of Energy Power Division. So today we'll discuss about the topic standards and specification, long journey towards metering security and future trends. Ladies and gentlemen, as a nation, we have invested billions of rupees, in fact, billions of dollars in developing power generation capacity. From massive hydroelectric power plants like Tarbela, Mangla, to RLNG power plants, thermal power plants, nuclear power plants, and growing fleet of wind and solar. All these represent monumental capital outlays. But yet, there is one question to be asked. And that question is, how do we get return on this investment? These are quite a huge investments. So what is the method of getting return on it? The answer is
will get unit by unit and through energy metering. So there comes the role of the meters, because through meters we are getting the calculation, getting the measurement, and ultimately will be able to take back the investments. Ladies and gentlemen, let's start our journey. And you see, this is the contents. I'll take you to mechanical era of the electromechanical metering. Then we'll move forward to static metering. And of course, we'll discuss about AMI architecture. And then we'll discuss about the future trends, future prospects, what are the new technologies coming, and then afterwards, in the last, I'll tell you about the measures and the actions which are required to be taken to tackle the opportunities, and not only the opportunities, but the challenges associated with these opportunities. We'll try to deliberate upon it. So, let's start our journey from mechanical era. As our Honorable Chima Saab have taken you back to 1948, but I'll move you forward and we'll start our journey from 1960. Ladies and gentlemen, from 1960 onward till almost 2000, we were having electromechanical meters. And of course, I'm sure most of you would be quite familiar with the functioning, with the working of those electromechanical meters. Actually, it works on a simple principle of electromagnetic induction. It was serving us very well, as our system was, as compared to the latest one. It was quite simple. And due to the simple construction of these electromechanical meters, it was working well, and we were not having as such issues with it. Even they were having longer lifespan. Actually, if we'll talk about the construction, then it was simple construction. There are some current coils, potential coils, the Toding magnet, and the rotating aluminum coil. You know, dear, when the system started growing up, as I do not tell you about the inherent flaws of electromechanical meters. I'll tell you something, some inherent flaws. The major one was, it was susceptible to tampering. And using the strong magnets, these electromechanical meters' accuracy could be disturbed. Some tariff issues, as we were having only one tariff at that moment, and the meters were not having the provision for multi-tariff, and there were certain other issues, and especially when we talk about the kWh and kVRH reading, these meters were not having the both provisions, just like nowadays we are having the smart meters. So for kWh reading, we need to use one electromechanical meter, and for kVRH reading, another meter. So these were some flaws, some issues associated with these electromechanical meters. Ladies and gentlemen, when our system started growing up, it wasn't easy to ignore or tolerate these inherent flaws.
And mostly, I'm sure everyone would be knowing it, over the years, studies have shown us most of the distribution losses, they are attributed to meter tampering, meter bypassing, billing manipulation, and direct hooking mean kunda. So, if we are ignoring this fact, then it means we are taking this theft of energy either by hooking or by using some other means or by using some electromechanical meters. It was like taking it is an inevitable. So we started thinking what to do. As a custodian, S&S, we are supposed to give you feedback, give you, give you solutions regarding the issues faced by distribution companies. So in 2003, we have achieved the milestone and first ever standard for static meters was introduced. There was actually a transition from electromechanical meters to solid state meters. In 2007, we have strengthened our digital portfolio by introducing standards and specifications for bulk consumers, like industrial consumers and commercial consumers. Ladies and gentlemen, there are several advantages of these solid-state meters over electromechanical meters. The first and the foremost is the accuracy of these meters is very good as compared to electromechanical meters. Similarly, for kWh reading and for kVRH reading, this simple meter, 1 meter would be used. Multi-tariff provision was also there. And the basic tamper detection features like dimmer operation, single wire operation, reverse current flow, reverse polarity, and there are a lot. It's a series, and it's been incorporated in our standards. So all these were there, and it was comparatively working very good. And it was actually a laying stone for the smart meterings. Ladies and gentlemen, this is advanced metering infrastructure. When we were having the solid state meters, then there was a question in our mind, what if we eliminate manual reading altogether? That was the question. And this is the solution. It was basically a standard DDS 98 that defines advanced metering infrastructure. So if we see this structure, this is DDS 98. And mind it, sir, it's been introduced in 2011. That's the proactive approach being carried out by S&S NGC. It was formerly NTDC, now it's been renamed as NGC. So S&S introduced this standard in 2011. What is it? It actually defines the whole AMI architecture. You see, these are wide area network meters, GSM, GPRS enabled meters. These are RF enabled, ZigBee enabled, and PLC enabled meters.
All these comes under the umbrella of DDS 98. So here it is DDS 105. It is actually a gadget which a meter reader carries, and when the meters come in its range, then automatically the meter data is being transferred to HSU, and then from HSU meter reader through GSM, it provides to its meter data collector. So that's how these HSU meters works. And Mia Saab is in front of us. Creative Electronics, they have supplied HSU-based meters to MEPCO. I think, I'm not sure about the quantity, but I think it was more than 100,000. पानी मिल जाएगा मैम पानी It was more than 100,000 meters, and I think they are working very well. Thank you. And now we see that this is DDS 110, and this is the specification, again standard, being framed by S&S department, and it defines meter data collector server. So actually, this is the whole architecture. Meters, GSM-based enabled meters, they communicate through GSM GPRS meters to MDC. MDC on hourly basis or whatever time the utilities define, that gives meter reading. And you see, here there is no involvement of our field staff, I mean meter readers. No human intervention, just automatically at a defined pre-intervals, data is being transferred to MDC. And next comes the role of MDM, meter data management. We'll discuss about it. Meter data management, actually it's a central repository, and it's like a brain we use. And it actually converts raw information into deep insights, and we can take actions, we can make data analytics, and using artificial intelligence and machine learning tools, we can work upon the data. Because when we talk about the smart metering, smart concept, data is everything. If you have the data, and if you have accurate data, you can take decisions, and those decisions would be actually informed decisions. So MDM, so this is the whole AMI architecture. What this AMI architecture does, it gives accurate billing, monitoring. How? Because now there is no human intervention, data is automatically transferring, so system is becoming more transparent, more reliable, and more secure. Operational efficiency. Of course, when you are having the complete data and you are taking the informed decisions, then operational efficiency would automatically increase. Consumer empowerment via data access. Now, the discourse, of course, you would be having a daily experience. You are getting a lot of complaints about overbilling, about bogus billing. All these issues have been resolved now. Now, the customer knows my meter reading is being carried out automatically in a smart manner, in a smart means. So he won't place any complaint. So that's the strength, that's the power of the data. And that's the power of automation.
ladies and gentlemen, and especially I would request the attention of CEO Lesko. Please, sir, please. I am telling that you are talking about the APMS. So my S&S department carries this pride. Actually, we were receiving complaints, regular complaints from distribution companies that our transformers, especially 100 and 200 kVA transformers, they are burning repeatedly. So we started working on it. Of course, sir, your input was there, and ultimately, we got success in framing the standard for asset performance management system. It is actually DDS 76. What it does? What? You're telling me that I have so just 3 minutes में मैं complete करूँ? So it was the asset performance management system. Sorry. Another initiative we have taken is the introduction of first ever integrated monitoring and protection unit. That's actually again a transformer with similar features. Here we use SMCD, smart metering and control device. And that device is intelligent enough to continuously monitor the loading position, and on the basis of the information SMCD is getting, it is taking actions. Not only taking actions in the form of disconnecting the power supply, but also it is informing its MDC. So that's the power of data. Now, I'm sure by using these APMS, by using these transformers equipped with integrated monitoring, protection, and control unit, I'm sure the burning out of the transformer would be drastically reduced. And of course, sir, under your guidance, under your directions, we are also working upon oil temperature sensor and oil monitor sensors. And we are waiting for the successful result of the proof of concept to proceed further, sir. All right, sir, thank you. Now, that's the most important slide. I have been telling you whatever we did, whatever we are doing. But now I'm going to tell you what is to be done in future. What are the future technologies? What are the innovative ideas? And then we'll discuss about some technical, details regarding this. Ma'am, what about time? May I take 5 to 6 minutes? Okay. आज इसी को बहुत मजा नहीं है। Sure, thank you. Ladies and gentlemen, PLC-based meters. Power line carrier communication. Although it's not a new technology, it's being exercised around the globe. But we were not having a very good experience about the PLC. It was deployed on trial basis in Lesko. If I'm not wrong, if my memory shows me, it was around 2015 or 16. But unfortunately, we did not receive the expected and the desired results. But now, in ISCO, they have started installing PLC project as a pilot project, and we have been continuously engaged with them.
I have been leading my team, and we're getting healthy reports up till now. But we want a complete, thorough, and comprehensive report regarding this so as to proceed further. But I'm sharing with you, we have initially prepared a draft regarding PLC, and it's been circulated to distribution companies for their input and feedback, and obviously after getting their feedback and the input, we'll proceed in this direction. 5G enabled smart meters with eSIMs. Sir, we have received the directions from the Ministry of Energy Power Division regarding implementation of 5G enabled smart meters with eSIMs. Sir, I feel pleasure while informing you our standard. Again, I would quote DDS 98. It doesn't place any bar, any restriction upon use of 5G. In recent past, we have approved the designs of the smart meters with 4G communication. So I'm sure if we are having 5G, then there won't be any technical issue. Regarding embedded SIMs, we have initiated the consultation process, and we have invited the meetings of all meeting industry, and I feel pleasure. Again, I feel happy that industry have assured us we can introduce, we can manufacture these embedded SIM meters. But when it comes to management profile, there comes the role of PITC, and PITC is working tirelessly and dedicatedly upon this issue. They are engaged with the telcos, and automatically, I'm sure within a short span of time, we'll be getting good results, and obviously, after that, without going into any further code of formalities, it would be incorporated. So, as I have been telling you, in latest scenario, data is everything. And when you have the accurate data, you have accurate customer profile, you have accurate customer preferences with regard to time zones, with regard to regions, with regard to customer type, and it's all because of this smart metering. So you can take the decisions, whatever you want, to improve the operational efficiency, and I'm sure using load forecasting tools and the planning tools, we are in a better position to improve our operational efficiency. We have heard the name SAFI and SADI. So these are the performance indicators, and by using these tools, you can improve your performance. Actually, I'm getting very so just I would speak something. Smart grids. Again, just I'm telling you, I need your focus. What is smart grid? Actually, when we talk about the smart metering, it's actually a smart concept. And what are the pillars of these smart concept is, one is smart meter, another one is smart grid, and the third one is smart appliances, and the fourth one is home area network, HAN. So it is the combination that gives you, please ma'am. Okay. So using the smart grid, what is this smart concept? Using these smart grids, now you have complete information from the generating plants. Okay. Just 1 minute. 30 seconds. Okay. So using these smart grids, you have complete information from generating plants to customer preferences to individual appliances. So you have complete information. So cybersecurity, that's the challenge. That's the challenge, and that's the biggest challenge. So
we need to counter this challenge as well. I am sure our distribution companies, our relevant departments are working on it. It's a burning issue. So call to action, I mean, what are the measures, what are the actions? Yes, sir, please. Okay, okay. So these are the actions. Discos, PITC, SNS, industry, and academia. I have forgotten to write this name, academia. There must be collaboration. Whatever issues industry is facing, whatever issues discos are facing, we must have strong collaboration. Local manufacturing and R&D. We have strong belief in our local talent, local industry. I'm sure if we give them some issue, they have the capability, they have the capacity, they have the relevant talent to deal with it. Adopt global standards, elected International Electrotechnical Commission, IEEE, GSM Alliance, and ISO, etc., NC, ASTM. There are a lot of standards. So we must have strong coordination with them. Ensure transparency and accountability, right man for right job, and secure, that's the last thing, secure every unit of energy. That is, actually, I have been with Chima Saab as in energy management and conservation. There we had the slogan, 1 megawatt saved is better than 1 megawatt generated. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर आतिफ शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, इस वक्त गुजारिश है कि वो नमाज जुमा के लिए तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। साथ वाले हॉल पे जेंट्स जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, और लेडीज़ जो हैं वो इसी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे जो है इसकी बैक साइड पे अरेंजमेंट्स की गई हैं। जुमा की नमाज के बाद 2:15 बजे आप लोग लंच कर सकते हैं। 2 बजे, सॉरी, 2 बजे आप लंच कर सकते हैं, लेकिन पहले जुमे की नमाज एंड 2 बजे लंच है, और उसके बाद 2:15 और 2:20 तक आपने अपनी सीट्स पे वापस आ जाना है। थैंक यू।
2 बजे खाना जो है वो स्टार्ट होगा। काइंडली टेक योर सीट्स। प्लीज सर टेक योर सीट्स। हेलो हेलो। प्लीज टेक योर सीट्स। लंच अभी ओपन नहीं होगा, अभी लंच नहीं मिलेगा। प्लीज टेक योर सीट्स एवरीवन। बेशक आप लंच के नियरेस्ट प्लेस पे बैठ जाएं, लेकिन प्लीज बैठ जाएं। Ladies, please take your seats. ऑनरेबल गेस्ट प्लीज बी सीटेड। अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। लंच आपको 2 बजे ही मिलेगा, ठीक 12 मिनट के बाद। नियरेस्ट चेयर पे आप बैठ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। वेलकम जवाद साहब। जवाद साहब। प्लीज़ सारे तशरीफ़ लाते जाएं और प्लीज़ बैठ जाएं। Discipline is very, very important. So please be seated.
Ladies and gentlemen, please be seated.
हो गया इनका जवाब साहब चीमा साहब रहते हैं 5 मिनट है चले चीमा साहब कर लें हाँ हाँ मैं करवा देती हूँ बस ये चीमा साहब खत्म करते हैं मैं करवा देती हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं आप लोग लंच कर सकते हैं प्लीज़ शो सम ग्रेस
ऑनरेबल गेस्ट प्लीज बी सीटेड। सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इट्स टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ अपनी नशिस्तों पर वापस आ जाएं ताकि हम सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बी सीटेड। अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस आ जाएं ताकि हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर सकें।
लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए ताकि हम सेकंड सेशन जो है वो शुरू कर सकें। डॉक्टर खालिद वलीद साहब जो ज़ूम से हमें ज्वाइन कर रहे थे, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है। ये जो लास्ट पे पूरा एक ग्रुप है, मैं चाहूंगी कि प्लीज अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं आप लोग। स्पेशली द लेफ्ट कॉर्नर, प्लीज जेंटलमैन अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सकें। Noman sir, ready for recording? The last line on the left side, please be seated, guys. Show some grace and be seated. जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब जो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग है। नुमान साहब, हम स्टार्ट करें? जी प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much IEEEP for conducting this very timely webinar. My congrats to President IEEEP, Engineer Tahir Basharat Chima Saab. Sir, thank you so much. You have been always so kind. Uh, this is Dr. Khalid Waleed. I am basically an energy economist. I'm a research fellow, climate and energy at Sustainable Development Policy Institute. The topic that was assigned to me is a bit difficult topic. That is socioeconomic effects of continued high levels of illegal abstraction of electricity, and what are the different effects on current regulatory regime. So it could go vice versa as well, but I'll try to keep in the scope of this topic. Previous speaker have very eloquently highlighted this topic, its modalities, what are different way forwards, what are different legal mechanisms. So I'll keep it short, keep it crisp. So let's dive into it. I'll be talking in a bit of different context of abstraction. First is traditional non-recovery electricity theft related things, and then second is the market distortion that happens with this current regime of subsidy, where people enjoy this subsidy mirage through multimeters and other sort of market distortive measures, which put a strain on socioeconomic dimensions and increase the electricity tariff as well. Third is the violation of sanctioned load in solar net metering. This is also a form of abstraction because this puts illegal load on those who are connected to the grid and in so forth. This is the one adverse impact of net metering as well. Uh, Economic load shedding and injustice associated with it. So these are few numbers. Previous speakers have talked about it. Electricity sales have been declining in Pakistan this year. It might remain stagnant, which is a good sign. Industrial and agriculture sectors, they have seen sharp declines. So we need to take care of that as well. The actual losses, T&D losses, they are 18.31% versus the allowed 11.77%. The financial impact, as Ramzan Saab also alluded to it, is around 276 billion in terms of T&D and around 314 billion in terms of unrecovered amount. This is again the bifurcation.
of growth. Domestic sector experienced 1% growth, commercial sector experienced 2% growth, whereas industry and agriculture they have experienced negative growth of 10% each. This trend is not good for the sector, particularly for distribution companies. This will hurt their revenues and impact on the electricity price as well. In terms of this is another gloomy picture. If you want to sort of understand Pakistan's distribution sector more and connect it with the illegal abstraction, different market distortive ways, you need to understand these two graphs as well. Uh, of total electricity consumers, around 53%, 49% are protected consumers, and 4% are lifeline consumers. 53% consumers in Pakistan, they consume less than 200 units. This is not a healthy sign for a healthy distribution company, that's distribution business of electricity. We need to sort of reform our tariff regime in a way that promote high consumption, given that we have a capacity trap. Electricity consumption, on the other hand, these 57% consumers, they consume about 16%. On the other hand, 1% industrial consumers, they consume about 25%. So this is the anomaly we need to take care. Let me jump right into it. The transmission and distribution losses, electricity theft, non-recovery. This is the picture. You can clearly see on the left-hand side that the PESCO has the highest percentage of transmission and distribution losses, and these blue bar are the actual losses, whereas the red bars are the allowed limits. You can clearly see that all the distribution companies in some capacity, some magnitude, they are exceeding that limit. And on the right hand, you'll see the recovery ratio as a percentage. The orange line shows that the 100% recovery. You can see Casco, SEPCO, HESCO, PESCO, they're lagging behind. In fiscal year 25, the recovery ratio has increased by around 4% as the sources in Ministry of Energy Power Division, and on frequent occasions, Lagari Saab has also alluded to it. 96.6% right now for the fiscal year 25, which is a good sign. This is a vicious cycle I always talk about. Electricity theft and subsidy leakages, they create disco revenue loss, which entails government subsidies to cover these gaps. And because of the subsidy, financing of subsidy require higher tariff for honest payers. Again, more consumers forced to steal electricity, because when tariff goes up, the economic utility of stealing electricity also goes up. So it is a vicious cycle we need to understand, and it is directly connected with the socio-economic background of it. मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ती है, लोग सवाब समझ के बिजली चोरी करना शुरू कर देते हैं. They started to think it as a right of their own. फिर उससे morality, the previous speaker on laws and regulations जो बात कर रहे थे, the morality जो है वो challenge होती है. तो उस चीज को शायद थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो tariff reforms कर सकते हैं. Second is subsidy mirage, more than 1 meters. ये एक बड़ा important graph है if you want to see this angle of illegal abstraction. If you compare the electricity consumers in different categories, different slabs, ये 2024 और 2025 और 26 की जो पार projections हैं और जो tariff notified है, वहां से numbers हैं. So you can clearly see that protected consumers have increased by 2%. Unprotected consumers जो कि 300 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, they have decreased by 3%. And unprotected consumers जो कि 700 यूनिट्स तक बिजली यूज करते हैं, they have decreased by increased by, there is a typo, they have increased by 1%. अब ये हुआ है कि ये जो 300 यूनिट वाली स्लॉट थी, इसमें जो 3% डिक्लाइन आया है, 1% has moved to higher unit, higher slab, और जो 2% है वो they have moved to the lower slot, which means आपका protected consumers, they have increased in 1 year by 2%. क्यों increase आ रहा है और ये क्यों इतना ज्यादा number है, we need to
अंडरस्टैंड, और उसके जो सोशो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाउ कैन वन कंट्रीज 54% of the population is a protected पॉपुलेशन, ये कैसे हो रहा है, इसको इसको इसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को हमें जो है वो थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंड करना होगा। शायद मेरे ख्याल में जो लोग हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस टैरिफ रिजीम, जहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है फॉर कंज्यूमिंग लेस देन 200 यूनिट्स, एंड दे हैव इंस्टॉल्ड मल्टी मीटर्स, ज़्यादा मीटर्स इंस्टॉल करके दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो हाउ वेल्दियर कंज्यूमर्स game the system. Again, if a consumer is consuming 600 units, he has an economic advantage कि अगर वो अपने आप को 3 meters लगा के he can be a protected consumer. Again, solar के साथ भी यही है। Those who have installed solar without net metering, uh, क्योंकि उनकी consumption कम होगी, maybe there is a chance that they become the protected consumer as well. So जैसे जैसे ये subsidies protected consumers बढ़ते जाएंगे, cross subsidization की मद में the consumers who pay more, who consume more, they'll have to pay more. So again, an illegal abstraction of electricity. Maybe tariff reforms are required. Subsidy mirage puts a financial burden on the economy, undermines social equity as well. Industrial and agricultural decline इससे आ रहा है, erosion of public trust जो है वो हो रहा है इससे। जैसे जैसे लोग देखते हैं कि बिजली का प्राइस बढ़ रही है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी। Third is net metering as a tool of profiting. अगर ये हो रहा है तो again this is again one of the only this is the only downside of the net metering मेरे मेरे मुताबिक, कि अगर इसको करें, पाकिस्तान has experienced phenomenal growth in net metering which is a very good sign. हमें शायद उसको better way में integrate कर सकते थे, किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। जब भी sanction load की violation होती है, which means कि you have installed more solar panels as compared to the allowed limit, आप जो है वो दूसरों का हक मारे हैं। So शायद distribution companies they need to come up with a better detection measures के कहाँ पे violation हो रही है, इस चीज को भी रोकने की जरूरत है। And then power tariff and economic load shedding. There is a phenomena जिसको हम कहते हैं Laffer curve, and this is directly connected with the socio-economic benefits, socio-economic situation. Laffer curve का मतलब है कि there is a non-linear relationship. एक हद तक ये जो dotted line नजर आ रही है, इस हद तक अगर इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू बढ़ते हैं, लेकिन अगर उससे क्रॉस करते हैं आप तो आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट के बढ़ने से रेवेन्यूज बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब लोगों को ये लगने लगा है कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में या अल्टरनेटिव वेज पे जाने में ज्यादा यूटिलिटी है, एंड देन दे ऑप्ट फॉर ईदर अल्टरनेटिव वेज या वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो एक ये चीज, और दूसरी चीज इकोनॉमिक लोड शेडिंग एंड इनजस्टिस, उससे भी आपका वो वाला कंज्यूमर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे कर रहा है वो अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लोड शेडिंग। दिस इज अनदर इनजस्टिस जिसको सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। शायद हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को AMI मीटर्स के थ्रू जो है वो शायद इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी होंगी। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं क्या एब्स्ट्रैक्शन के? सबसे पहला तो ये कि देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इकोनॉमी, सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ गया आपका, और सर्कुलर डेट, whenever circular debt increases it puts a surcharge on consumers, those who are paying electricity bill. अब शायद DSS की मद में भी कुछ surcharges जो है वो आ रहे होंगे। सोशल इक्विटी जो है वो मुतासिर होती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनइक्वालिटी है कि बिल्कुल जैसे टैक्स निज़ाम में there are those who are filer and there are those who are non-filers, बिल्कुल वही सिचुएशन है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी। तो वी नीड टू हैव अ बेटर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स जो कि इक्विटी क्रिएट कर रहा हो। अगेन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिक्लाइन है, इरोजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम में होगा, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट उतना कम होता जाएगा। और इस टाइम पे जो सबसे बड़ी जरूरत है दैट इज कि आप सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सिस्टम में लोगों का जो ट्रस्ट है वो लेके आए।
रिकमेंडेशंस क्या है? बड़ी सादी सिंपल सी हैं। मेरे से पहले जो स्पीकर्स हैं दे हैव alluded टू इट, बड़ा डिटेल में बताया। मैं एक ही चीज़ बात करूँगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग का फुकदान है। अगर इंटीग्रेटेड प्लानिंग आ जाती है तो शायद ये मामला ठीक हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन अकेला शायद इस चीज़ का हल नहीं होगा जब तक कंपटीशन या कम्पेटिटिव मार्केट नहीं आ जाती। अ, हमें शायद टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। आप लोगों को एवरेज टैरिफ पे दे दें, जैसे आपने आईएमएफ के साथ भी कमिट किया हुआ है। देयर इज़ अ कंडीशनैलिटी इन आईएमएफ आरएसएफ प्रोग्राम कि पाकिस्तान विल विथड्रॉ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स सब्सिडी और उनको बिस्प के थ्रू दी जा रही होगी। वो भी शायद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में, इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में दैट विल अगेन कॉज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। फिर हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, विच इज वेरी गुड स्टेप। लेकिन मुझे लगता है कि एएमआई मीटर्स की वजह से शायद जो आपका आपका जो कंप्यूटराइज थेफ्ट है, जो आपका हैकिंग का मसला है, जो आपके डेटाबेसेस के साथ प्रॉब्लम है, वो शायद आएगा। उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपनी जो है वो इस तादाद कार बढ़ाने की जरूरत होगी। देन अगेन we need to go towards subsidy reforms और उसको interlink करना होगा। We need to provide solar panels for protected consumers so that हम subsidy जब उनसे withdraw करें तो एकदम से impact ना आए। तो शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज करने की बजाय we can use the utility of solar panels। एक चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इस टाइम पे जरूरत है, दे नीड इन्वेस्टमेंट्स टू टू सॉर्ट ऑफ मॉडर्नाइज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज जो हो सकती है और फिर शायद थेफ्ट पे भी काबू पाया जा सकता है। एक चीज जो हो सकती है दैट इज द यूटिलिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। मैं हमेशा से काफी सारे फोरम्स पे ये बात कहता आया हूँ कि जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो इलेक्ट्रिसिटी नेट मीटर्ड सार्फिन से खरीदती हैं, it can generate carbon credits और दुनिया में उसकी मांग भी होगी। It will open up another source of revenue for distribution companies और उस revenue को use करते हुए they can spend, they can invest on their distribution system. So we need to have integrated planning. We need to think about the socio-economic landscape, HDI index क्या-क्या है उस इलाके के, और वहाँ पे लोड शेडिंग का क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का क्या स्टेटस है। उस चीज को देखते हुए लॉ इन्फोर्समेंट बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल से वी नीड टू थिंक ऑन द ग्राउंड्स वेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर पावर्ड इनफ और पॉलिटिकली पावर्ड हैं या इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है उनके पास कि दे कैन वो कनेक्शन काट सकते हैं। शायद इस तरह के मेजर्स लेने से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को जो है वो काबू पा सकेंगे। With this, I thank you so much for listening me. There are few suggestions जो मेरे mind में अभी भी चल रही हैं, लेकिन I can give it in the writing as well. Uh, uh, Given the time constraint, I thank you all. If there are any question, I would be available virtually. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद आपके प्रेजेंटेशन का। और एक चीज़ मैं मज़ीद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करना चाहूँ एक बात का, कि अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए, क्योंकि इस वक्त दोनों स्क्रीन्स पर शॉट्स आप लोगों के भी आ रहे हैं। तो बी अलर्ट, बी अटेंटिव। जो कैमरा है कभी भी आप उसका शिकार हो सकते हैं। अब मैं जिन्हें दावत देने जा रही हूँ उनको बुलाने से पहले मैं तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी इन्हीं में से एक से है। तो जो हमारे साथ कंपनीज़ हैं उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एक्यूरेट प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, केबीके, पेल। अच्छा, बस एक पे ही क्लैपिंग करनी थी, लगता है उनके स्पॉन्सर के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। वर्टेक्स, इंटेलिजेंट मीटरिंग सिस्टम, माइक्रोटेक, ट्रांसपो पावर एंड वर्ल्ड ओवर इंजीनियर्स। ये वर्ल्ड ओवर इंजीनियर्स के साथ ज़्यादती है। उनका नाम मैंने लिया और आप लोगों ने चलें कोई बात नहीं। तो अब मैं दावत दूंगी मियां सुल्तान महमूद साहब को, सीईओ क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इस वक्त पाकिस्तान की 9 मीटर्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी सपोर्ट से ये इवेंट यहाँ पर मुनक्किद हुआ।
ये स्पॉन्सर्स हमारी शान है, हमारे इवेंट्स की जान है। प्लीज़ वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम ने तारफ़ तो मेरा करवा दिया है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल मीटर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आपने खाना वाना तो खा लिया हुआ है, तो थोड़ा सा इतिहास है, क्योंकि ये हमारा एक नेशनल इशू है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज़रा थोड़ा अटेंटिव रहना है। डेफिनेटली खाने के बाद थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, और चूँकि हमने हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हमने मिल के हल करने हैं। हम और आप एक हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है पाकिस्तान की, और जितने भी इसके एंड यूज़र हैं और जो इसकी प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हैं, सारे एक पेज पे हैं। हम एक पेज पे होंगे तो हम अपने मसले हल करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस पे अटेंशन दें, फिर हम लोग इसके ऊपर सलूशन निकालेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे हमने अपने मसले हल करने हैं। और डेफिनेटली कहते हैं अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी दुनिया में नहीं भेजी, कोई मसला भी नहीं ऐसा दिया जिसका इलाज ना हो। अब मुआलजे अगर सही हों तो वो डायग्नोज भी कर लेता है और बीमारी का हल भी निकाल लेता है। तो ये जो टॉपिक है आज की हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है जॉइंट, वो है एफर्ट्स ऑफ द लास्ट डेकेड एंड फ्यूचर ट्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन AMI स्मार्ट मीटरिंग। नेक्स्ट मैं तारफ़ आपको अपना करवा दूं। मैं आपसे लोगों से ही था। अबाउट 23 इयर्स बैक मैं यहाँ पे लेस्को में ही एक्शन था। आई लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने कहा मैं अगर इंडस्ट्री में जाता हूँ तो आई कैन डिलीवर मोर। तो विद द रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मोर देन 50 इंजीनियर्स हैं, जिसमें से माशाल्लाह 8-10 जो हैं फ़ीमेल्स इंजीनियर हैं, कुछ यहाँ पे आई भी हुई हैं। तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम सलूशन देते हैं। आप हमारी इस प्रेजेंटेशन को जब इन डेप्थ देखेंगे और आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है। ऑल्दो देयर आर प्रॉब्लम्स। अभी भट्ट साहब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। वी आर विद भट्ट साहब, वी आर विद ऑल डिस्कोर्स। हम लोगों ने मिल के मसाइल अपने हल करने हैं। और ये लोकल इंडस्ट्री है, इसको आप किसी भी वक्त कह सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि भाई आओ मसले को हल करो आके। ये क्या आपने जो बाहर से कोई बंदा आया होगा तो वो तो अपना पैसा कमाएगा, भाग जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी कि चीज़ें जो है ना वो दुरुस्त नहीं हुई। हाँ जी, ये ऑल पाकिस्तान स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चर जो मैंने आपको पहले बताया, वी आर स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट। हम डिस्कोस के साथ खड़े हैं, हम डिस्कोस के BOD के साथ हैं। हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है सबका कि हमने अपने मसले को हल करना है। ये मैंने पिक लगाई है, ये मौजूद है इसके 1972 में इन्होंने फर्स्ट टाइम नेट मीटिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये हमारी कंपनीज हैं लोकल 8 जो स्मार्ट मीटर्स बना रही हैं, ये उनका तारफ़ मैम ने करवाई दिया। एम्पावरिंग पाकिस्तान एनर्जी फ्यूचर वेयर स्मार्ट मीटिंग मीट्स नेशनल प्रोग्रेस। Our mission is to modernize electricity distribution, reduce losses, empower consumers, and enable data-driven energy governance, paving the way for a resilient and digitally connected Pakistan. हमने अपना रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, डिजिटली करना है। हमने परफॉर्मेंस भी देनी है तो डिजिटली देनी है। अभी जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग मिल के उनको सॉल्व करेंगे, और वो भी आपके डैशबोर्ड पे आपको इन नियर फ्यूचर मसाइल मिलेंगे। कोई बंदा जहाँ भी किसी गैजेट के साथ भी अगर चोरी कर रहा है उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में जो टैलेंट है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, आप आके अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें, उनका ब्रेन देखें, और आपको पता चलेगा कि ये मसले हल करने पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए कोई इशू नहीं है। हम कसूरवार हैं इस बात का कि हमने उनको कोई रास्ता नहीं दिया, हमने उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया। हम उनको यंगस्टर को हम इन्वॉल्व करते हैं। हमारी माशाल्लाह से यंग टीम, मैं आई एम टर्निंग टू 69। मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच हेल्दी, और मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब मैं उनको मिलता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनके काम देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार इस मुल्क को सीधा करना तो कोई मसला ही नहीं है। असल बात क्या है कि हमने उनको जॉबलेस कर दिया, उनका जो पोटेंशियल था उनको डिप्रेशन में डाल दिया।
ये हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, इसके ऊपर हम वे फॉरवर्ड निकालेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें जो हैं वो सीधी की जा सकती हैं। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सीलेंस है, पाकिस्तान मीटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट असेंबलिंग। यहाँ पे डिज़ाइन के लोग भी बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लोग भी बैठे हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ में आते हैं। आप किसी चाइनीज़ इंडस्ट्री की को जाके देख लें या बाहर की किसी इंडस्ट्री को देख लें, हम किसी से पीछे नहीं हैं। ना अल्हम्दुलिल्लाह हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं। वो भी लोग वही करते हैं, कंपोनेंट बनाने वाली चंद कंपनीज़ हैं। जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जो लोग हैं वो सारे एक रूफ के नीचे नहीं सारा काम होता। वो जो कंपोनेंट है पाकिस्तान में, अगर हम वो तो मिलियन बिलियन में कंपोनेंट बनाते हैं, हम भी उन्हीं से कंपोनेंट लेते हैं, जैसे चाइनीज़ कंपनी या कोरियन या ताइवान जो दूसरे लोग हैं जहाँ से पार्ट्स लेते हैं। हम भी फ्रांस से भी पार्ट्स कुछ लेते हैं, कुछ लोकल लेते हैं, तो मिलके हम फिर इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं और ये सिस्टम को हम आगे लेके जाते हैं। Aligned with Ministry of Energy and Planning strategic focus on following 5 E's। ये एक 5 E's हैं, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इक्विटी। इसके ऊपर हमने मिलके अमल करना है, इसके ऊपर काम करना है, अपनी यूथ को यूटिलाइज करना है और इंशाल्लाह हम इसको मसाइल को हल कर लेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर स्टेपिंग फॉरवर्ड एज की इनेबलर ऑफ नेशनल प्रोग्रेस एंड काज। जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारी नेशनल काज है, इसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे और आपको साबित करेंगे। हमें आप फिर इधर बुलाएं, हम आपको इम्प्रूवमेंट देंगे कि आप नेक्स्ट इवेंट जब करते हैं हम स्पैन के अंदर प्रोग्रेस बताएंगे आपको कि हमने अब इतनी प्रोग्रेस अचीव कर लिया। विद द राइट पॉलिसी डायरेक्शन With the right policy direction and government support, Pakistan meter manufacturers are fully capable of not only fulfilling domestic power sector need, but also export smart metering technology। हमारे लोग इस काबिल हैं कि ये अपनी मीटर्स बना के दुनिया में बेच सकते हैं। हमारा मीटर किसी सूरत भी जो हम जो बना रहे हैं वो कम नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे हैं। दूसरी बात है कि हमने लोकलाइज की हैं कुछ चीज़ें जो कि बाहर वाले लोग इतनी जल्दी उसको समझ नहीं पाते। जैसे अभी बात हो रही थी कि पिलफरेज की लोग नए से नए रास्ते ढूंढते हैं, उसके ऊपर हम अगली स्लाइड पे कुछ डिस्कस करेंगे। द डिसीजन मेकर शुड इंश्योर लोकल कंटेंट प्रेफरेंस इन IDA, ADB, वर्ल्ड बैंक फंडेड AMI प्रोजेक्ट्स। होता क्या है कि दुनिया पूरी अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। इंडस्ट्री जिस मुल्क की तरक्की करती है वो मुल्क तरक्की करते हैं। जिस किसी को भी आप देख लें जिनको उनकी गवर्नमेंट ने रास्ता दिया, कहा कि भी आप आएँ काम करें हमारे साथ मिलके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चाइनीज़ की BYD की। आज हर बंदा कहता है कि जी BYD और BYD कहाँ पहुँच गई। अगर आप देखें कि 1983 के बाद 95 में गालबन वो डेंग जोपिंग आया, उसने आके अपने इंडस्ट्री को विजन दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया और बुला के कहा, ये आपको शायद याद होगा कि 70s में शाह फैसल के दौर में पेट्रोल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे पास अगर पेट्रोल बंद हो जाता है तो हमारा तो सिस्टम बैठ जाएगा। उन्होंने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर कोई ऐसी स्टेज आती है तो हाउ वी कैन गेट रिड अबाउट। उन्होंने कहा जी हम वी शुड गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने इनको ऑर्डर्स दिए, OD की, एडवांस पेमेंटें की। ये वापडा में भी यूँ ही होता था। आपके सीनियर जो लोग इधर बैठे हैं उनको पता होगा कि वापडा हाउस के अंदर जो हमारे चीफ इंजीनियर होते थे, महमूद साहब थे और भी लोग थे, वो इंडस्ट्री को बुला के पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं थी बनती। ये जो इंडस्ट्री आज आपको नज़र आ रही है यूँ की मरहूने में है, वो एडवांस पेमेंट कर देते थे 100%। आओ भाई मशीनरी मंगवाओ, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है, लोकल बनाओ। मुझे याद है यहाँ पे चौधरी वायरों की, मुझे उस दौर में मैं सर्विस में था, तो उनको उन्होंने कहा कि जी ये स्टे वायर भी इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान में। ये उन लोगों की मरहूने में था। उन लोगों ने बहुत बड़ा वाइटल रोल है उन लोगों का। उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को फंडिंग की, फंडिंग करके उनको कहा इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगी। आज हम लोग देखें बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, ऑल तो प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, मगर इंडस्ट्री लगी होगी, उसी इंडस्ट्री ने मसाइल भी हल करने हैं। तो बात थी ये जी, ये मुल्तान की एक पिक्चर है। ये नेशनल लेवल इनिशिएटिव जो लिया हमने
यूएसएड वालों ने कहा, बहुत सारे लोग इधर मैपको वाले ख़ास तौर पे जानते हैं इस बात को, कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था इनका यूएसएड का। उन्होंने इस्लामाबाद में मुल्तान में और पेशावर में और डिफरेंट डिस्कोस के अंदर उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट किए। और उन्होंने ये, आपको पता है इससे पहले जब ये यूडीएल नहीं था, पीआईटीसी नहीं थी बनी, उससे पहले हमारे बहुत सारे मसाइल थे। वेंडर लॉक था, कोई बंदा 1 मीटर दे कंपनी सप्लाई करती थी, उसके बाद उसका सिस्टम जो है ना वो चौक हो जाता था, दूसरा बंदा आ ही नहीं था सकता। एक सिस्टम के अंदर दूसरा मीटर दूसरी कंपनी का नहीं था लगता। उन्होंने, लोकल इंडस्ट्री ने उनको हेल्प आउट किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की और यूनिवर्सल डाटा इंटीग्रेशन जिसको यूडीएल कहते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन पे गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी कंपनी का आप कोई मीटर लेके आते हो और पीआईटीसी उसको यूडीएल सर्टिफिकेशन करवाते हो तो आपका मीटर सिस्टम के अंदर बिल्ड इन हो जाता है। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग में उन्होंने एसेट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वो हमसे डेवलप हो रहा है। ये लोकल कंपनी थी जिन्होंने डेवलप किया था। आज से 4 साल पहले हमने पेशावर में पायलट प्रोजेक्ट एक लगाया, चमकनी सब डिवीजन। मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, 98% वहाँ पे लॉसेस थे, मोर देन दैट। कुंडे लगे हुए, उसके ऊपर लोग बिल देने के आदी नहीं थे और उसको एज ए मॉडल डिवीजन बनाया, सब डिवीजन बनाया। आज आप वहाँ पे फीडरों के ऊपर लोड जो था 400 350 एम्पीयर चलता था। जब हमने सिस्टम डिप्लॉय किया तो 240 200 से लेकर 240 तक जो है ना लोड नीचे आ गया। वहाँ पे हमने APMS भी लगाए, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए और लॉसेज जो हैं वो कंट्रोल हो गए। वहाँ पे दैट वाज ए बिग चैलेंज फॉर अस, उनको लगाना, डिप्लॉय करना। वहाँ पेशावर के लोगों की मेंटालिटी है, वो तो आपको पता है, असला निकाल लेते हैं, निकाल के कहते हैं कि जी आप लगा के देखो कैसे लगाते हो। कुछ उन्होंने बीच में यूनिट उतार के घर भी रख लिए APMS के, इसी तरह मीटर्स के साथ। मगर एक बात है कि अगर आप चमकनी सपनिंग का डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है, आप देखें तो अब कहाँ का कहाँ बात चली गई है। डिप्लॉयमेंट इंक्लूडेड इंटीग्रेशन विद MDMS मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एंड हेड एंड सिस्टम अलॉन्ग विद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। 2 मिनट, अभी तो मैं आया ही। डिप्लॉयमेंट ऑफ, अच्छा अभी ये बात चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करता हूँ क्योंकि ये मुझे स्लिप उन्होंने दे दिया कि टाइम थोड़ा है। मुझे तो आधे घंटे की स्लैब मैम आपने दी थी, अभी तो 7 मिनट हुए हैं। तो आइस्को में ये जो है ना प्रोजेक्ट उन्होंने किया था इसका PLC का, उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं, क्वेश्चन मार्क है। अभी इस मेरे से पहले प्रेजेंटर थे डिज़ाइन वाले, उन्होंने भी बताया हमने हरगिज़ वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने जो बाद में हमारे लिए एक यही हो गया जी हमने एक नया एक्सीडेंट कर लिया है। हम लोग अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं करते, उसके ऊपर टेस्ट रन नहीं करते, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। विद रिजल्ट होता है कि बाद में हम पछताते हैं। अभी 9 लाख मीटर का ये प्रोजेक्ट है, तो देखें अल्लाह ताला करे इसके लिए कोई मेहरबानी हो जाए, ये काम चल पड़े, आगे निकले। हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने ये कर्ज जो है वो वापस करना है। हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो जो पैसा है वो हमारे अल्टीमेटली जो कस्टमर है उन्होंने पे करना है। डिप्लॉयमेंट इंक्लूडेड इंटीग्रेशन ये तो हो गया सर, इसके बाद हाँ वो वेंडर लॉक भी हो गया उसका जो था PLC वाला। Upgrading to advanced meeting infrastructure makes the utility more efficient and responsive. That's because AMI provides real-time data on ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आतिफ साहब बता चुके हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, टाइम थोड़ा। ये चैलेंजेस हैं और रिकमेंडेशन है इसकी, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा कि हमारा जो PTA है टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर उतनी जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो चीज़ उतनी अपग्रेडेशन नहीं हुई, ना वो प्रॉपरली मेंटेनेंस कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन भी सुन रहे होते हैं तो कॉल कट जाती है। ये अपग्रेडेशन की ज़रूरत है इसको। इसके लिए टेलको जो है उसका रोल और PTA का रोल वाइटल है, इसको हम आगे डिस्कस भी करते हैं। वी नीड टू अडॉप्ट अदर AMR कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू कैटर द बैलेंस डिमांड, फॉर एग्जाम्पल PLC RF, PLC प्लस RF, हाइब्रिड और इसी तरह लोरा वैन, ब्लूटूथ एंड वाइजेंट। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अडॉप्ट करके हम लोग अपना वहाँ पे जो ज़रूरत है जहाँ पे वो उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, तो ये हम इस मसले को भी हल कर सकते हैं। और दूसरे हम एक इसके ऊपर वर्किंग ग्रुप की मैं भी बात करूँगा आगे जाके, उसमें हम PTA को और बाकी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे जो कि बैठ के इसके ऊपर एक थिंक टैंक बैठे और सोल्यूशन देगा। नेटवर्क कवरेज टेलको इन रूरल एंड फार फ्लंग एरियाज, देयर इज लॉट ऑफ डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर्स
आप प्रोक्योरमेंट, इसका भी हम सोल्यूशन देते हैं आपको कैसे इसको करना है. Improper installation of AMI meters. So far, DISCOs, GOP don't have sufficient funds to support AMI rollout, deteriorated distribution network infrastructure, consumer and user paying capacity. ये जो लास्ट वाला लिखा है लफ्ज़, ये वही जो भट्ट साहब ने बात की थी कि हमारा जो कस्टमर है उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वो बिजली का बिल पे ही नहीं कर सकता, उसकी परसेंटेज इज़ टू मच जो उसका इनकम है. नहीं 30 मिनट अच्छा, वो मैम कहती है जी आपका टाइम हमने कम कर दिया. एनीवे, ये इट इज़ सजेस्टेड दैट रेट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म में भी अडॉप्टेड. अगर हम लोग अभी देखें ना, प्राइसेस आपने इंटरनेशनल टेंडर भी कर लिए, लोकल टेंडर भी कर लिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी हम प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं. प्राइस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जब टेक्नोलॉजी नई आती है डेफिनेटली उसकी प्राइस हाई होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस ड्रॉप हो जाती है. हम बैठते हैं आपके साथ, वी आर विद यू. हमने अभी चेयरमैन जो BOD हैं आमिर साहब, इनसे भी बात की. हमने इन्हें कहा कि सर आप इसके ऊपर एक एवरेज प्राइस निकाल लें. जैसे मैंने कहा ना कि जब टेक्नोलॉजी नई आती है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं. चाइनीज़ प्राइस क्यों कम है? वो एंट्री के लिए प्राइस कम कर देते हैं. वो जब वंस दे एंटर्ड दे नेवर गो. वो कहते हैं ये एक टेंडर है, 2 टेंडर हैं, वो दे आर वेरी रिच. वो एंटर हो गए, उसके बाद लोकल इंडस्ट्री जब बंद होगी साल 6 महीने में, वो फारग हो जाएंगे. वो जब आएंगे वो अपनी प्राइस फिर बढ़ा देंगे. वो सब्सिडाइज करके प्राइस टेंडर कोड करते हैं. हमने मुझे एक मिनिस्ट्री में भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने प्राइस 27,900 रुपया दी थी. मैंने कहा ठीक है हमने दी थी. हमने कहा चाइनीज़ को हम एंटर नहीं होने देंगे. हमने अपनी प्राइस को सब्सिडाइज करके हमने कोड कर दिया. मैंने कहा जब ये एक दफ़ा आ गए, वो बद्दू अंदर और ऊँट अंदर बद्दू बाहर वाली बात है. तो हम लोगों ने सब ने मिल के कोई ऐसा विन विन सिचुएशन निकालनी है कि हम अपने मसाइल जो हैं उनको सीधा कर सकें. जो प्राइस का कंसर्न है वी आर रेडी टू एड्रेस, उसको इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे. फाइनेंशियल मॉडल की बात है, इसके ऊपर भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. मैम मेरे पीछे खड़ी है सोडा लेके, तो मैं ज़रा क्विकली करता हूँ इसको. अच्छा, दूसरी बात ही जो कि पेमेंट कैपेसिटी जो है लोगों की नहीं है. आप लोगों को कोई स्मार्ट मीटर लगा लेता है, इसके बाई डायरेक्शनल मीटर लगा लेता है, उसके लिए बड़ा आसान सा काम है. आप उसको बिलों में डाल दें पैसे उसके. कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सोलर सिस्टम लगाता है, वो बेचारा इसलिए नहीं लगाता कि जी मैं मीटर की कास्ट भरूँ. मैं लोगों के पास बिल्कुल इस वक्त यानी बहुत उनकी पतली हालत है, और हमने हर बंदे की जो पल्स है उसको देखना है और उसके मुताबिक हमने आगे चलना है. मैं बस थोड़ा ही काम है, 5 मिनट में सहमत कर दूँ. भाई 5 प्लीज़, बस 3-4 मैम को मैंने कहा मुझे 5 मिनट दे दें. कहते नहीं 3 से 3.5. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 3 से 3.5 मिनट में. नहीं आपने नहीं कहना, ये काम खराब हो जाएगा. ये आगे नहीं जा रहा. ये मैं डाटा आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो डिप्लॉयमेंट हुई है स्मार्ट मीटर्स की, ये आप देखें सऊदी अरेबिया में, USA में, जापान में, फ्रांस में, इटली में. और हाइब्रिड, GSM, NB और RF, ये वही टेक्नोलॉजी जो मैं बता चुका हूँ, उसी के ऊपर गए हैं. और लोगों ने कहीं किसी ने 90%, जापान 100%. और इंशाल्लाह विद इन 3 years वी ऑल मीटर मैन्युफैक्चरर्स आर कमिटेड विद द सपोर्ट ऑफ डिस्कोस मिनिस्ट्री. हम लोग ये पाकिस्तान में अपना जो है इसको, ये जो टारगेट है 100 वाला, इसको हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ले जाएंगे. ये रेफरेंस केसेस हैं जो मैंने आपको पहले बताया. जिगी की भी है, RF मैश की भी है. हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि हाउ वी कैन, हम जब तक लोकल सोल्यूशन पे नहीं जाते. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. मैं 2012 की आपको बात बताता हूँ कि जब हमने अपनी एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, स्विच गियर की फैक्ट्री लगाई, तो हमें SNGPL वाला कहते हैं कि जी वी डोंट हैव द गैस, हम दोहा से इंपोर्ट करेंगे कतर से, तो फिर हम आपको गैस देंगे. हमने तो बैन लगा दिया गैस देने पे. तो मैंने कहा क्या करूं? कहते हैं जी आप LPG ले लें. मैंने कहा जब आप इंपोर्ट करोगे तो उसकी कास्ट तो बेरेबल नहीं होगी. हमारे करीब ही कोई ग्वाला कॉलोनी है 5 किलोमीटर पे, हम वहाँ से गोबर उठाते हैं, गैस बनाते हैं अपनी. आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस गैस है, और उसकी जो आगे फर्टिलाइज़र है उसकी कास्ट गैस से भी ज़्यादा है.
बात है कि हमने अपने लोगों को सस्ते सोल्यूशन देने हैं। मैं उसके ऊपर आता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, कि जब हम लोकल सोल्यूशन देंगे अपने लोगों को, अल्लाह ने तो बहुत नवाजा हुआ है हमें, बेतहाशा बेपनाह वसाइल हैं हमारे पास, मगर हमने इनको इंटीग्रेट नहीं किया, हमने उसको चैनलाइज नहीं किया। ये सारे जितने इंजीनियर्स बैठे हैं इनकी ज़िम्मेदारी है, ये कमिट कर लेना आज कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। मैं आपको बाखुदा कहता हूँ कि ये मुल्क 2-3 साल के अंदर ठीक हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम उस लेवल पे लेते नहीं, हम तन आसान हो गए, हमने इंपोर्ट करके खाना शुरू कर दिया, हमने इंपोर्ट करके ये पहनना शुरू कर दिया, और जो पाकिस्तान 65 की दहाई में था वो पाकिस्तान नहीं रहा। और इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम दोबारा उसी डगर पे लाएंगे और हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स दे आर क्वाइट कैपेबल कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि हमने 714 डाइजेस्टर जो हैं, पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर इधर आए, एक उनके साथ फेडरल मिनिस्टर थे, कहने लगे कि जब मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा जी ये डिप्लाई करें चीज़ें सीधा कर लें। इसके पास डाटा मेरे पास मौजूद है, 8.2 कंसल्टेंट था जिसने ये कंसीव किया था प्रोजेक्ट। इसके अंदर इन्होंने 714 डाइजेस्टर का एक किया कि जिस बंदे के पास 2 एकड़ से लेके 12 एकड़ तक ज़मीन है और 10 एनिमल है, उसको ये 8 क्यूबिक मीटर का जो मैंने आपको दिखाया डाइजेस्टर फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। और उस लकीली 2 चाइनीज़ कंपनी और एक हमारी कंपनी जो है क्रिएटिव, ये क्वालिफाई कर गई। उनके क्वालिफिकेशन से क्या हुआ कि जब फाइनेंशियल बिड खुली तो हम लोग लोएस्ट थे, हमने चाइनीज़ को बीट किया। हम इंशाल्लाह मीटर इंडस्ट्री में भी हम आपको गारंटी करते हैं हम चाइनीज़ को बीट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनको कर ना सकें। मैं आपको इसकी फर्दर बताता हूँ। इसकी सक्सेस इतनी थी कि उन्होंने कहा कि 12 लोगों का खाना 3 टाइम का बनना चाहिए। हमने इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि इसमें 25 लोगों का खाना 3 टाइम का बनता था इस डाइजेस्टर से। छोटा सा डाइजेस्टर है, अब हम लोकल बना रहे हैं। 600 डाइजेस्टर का परवेज़ लाई साहब कहने लगे मेरे इलाके में भी लगाओ। एक नया टेंडर आया, अगेन वी वन द टेंडर, उसको भी हमने डिप्लाई किया। इस वक्त 714 यूनिट जो है ना वो चल रहे हैं, हमने लगा के भी दिया उन्हें। ये उसकी वैल्यू है। ये देखे, ये टाइम था, वो जर्मन कंसल्टेंट था, ये गुजरात लगाए थे हमने मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में। ये उसके बाद वाला प्रोजेक्ट है जो हमने 23 में बिन किया, 24 में इसको मुकम्मल कर दिया। इसमें 600 डाइजेस्टर थे। ये वो डाइजेस्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, सस्ता सोल्यूशन है। या हम लोग अगर लोगों को गैस इंपोर्ट करके देंगे, हाउ वी कैन रन द कंट्री। बिजली हम इंपोर्टेड देंगे उनको, कैसे चल सकता है। फ्यूल आप इंपोर्ट करो, कोयला इंपोर्ट करो, बिजली बना लो, कास्ट पहाड़ पे चढ़ जाए, फिर पोजी वो कुंडा डाल दिया उसने जनाब मीटर रिवर्स कर दिया उसने। ये चीज़ें जो है ना हमारी सब की ज़िम्मेदारी में शामिल है कि हम उनको सस्ता सलूशन दें। सस्ती बिजली, सस्ती गैस जब तक हम अपने लोगों को नहीं देंगे, हम अपने इस दलदल से नहीं निकलेंगे, निकल ही नहीं सकते। आपके थाने कचहरियाँ छोटे हो जाएंगे, आपको थाने कचहरियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। लोग सारे जितने लोग चोरी में इन्वॉल्व हैं ना, इन सब को आप जेलों में डाल देना तो जेलें भर जाएंगी आपकी। अभी भट्ट साहब ने जो दिखाई थी स्लाइड 12,000 के ऊपर इन्होंने सिर्फ जो अरेस्ट करवाए, दैट वाज अराउंड 10% जो इन्होंने टोटल की चोर पकड़े। वो हमें कानून दान सिखा रहे थे कि जी ये कानून है, ये सज़ा है, वो सज़ा है। वो चोर जो बेचारे के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, वो कहते मुझे जेल भेज दो, मैं उधर जाकर रोटी तो मिल जाएगी। बात वही आती है कि हमने वी शुड हैव टू गो फॉर चीप सॉल्यूशंस। जब तक हम सस्ता सलूशन नहीं देंगे वी कांट गेट रेड आउट ऑफ इट। ये इसके चूल्हा भी दिया, ये लगाने का स्टाइल बता रहा हूँ कैसे लगाया। हर घर जिस चीज़ की वो जो कुरानदाजी हुई इसकी लगा के हमने डीसल्फ्राइजर भी बनाया इसका। ये सारा अब लोकल है। पहले हमने थोड़े चाइना से मंगवाए, अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोड्यूसिंग इट लोकली। अब नेक्स्ट चलता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। हाँ, एक ये हम स्लाइड है, इसके ऊपर ज़रा फोकस करें कि ये एक ज़मीन है आपके पास 50 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़। इसके अंदर आप एनिमल रखते हैं। लैंड एनिमल तो खाता ही वेस्ट है। आप 1, 2 एकड़, 4 एकड़ ज़मीन रिजर्व कर दें एनिमल्स के लिए, आपकी दूध की नीड पूरी हो गई, गोश्त की नीड पूरी हो गई, आपके पास जो आपका फर्टिलाइज़र है वो बन गया, आपकी गैस बन गई, एनर्जी बन गई, बिजली बन गई, व्हाट एल्स। ये तो लोकल अवेलेबल है सारा कुछ। आप देखें ना कि एनिमल वेस्ट से जो उसका फर्दर वेस्ट है, ये तो हमने क्या किया, हमने वेल्थ को वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सी बात है कि एनिमल ने तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल ही होना ही होना है। आपका जो है अगर आप सरप्लस करते हो तो यू कैन एक्सपोर्ट द मीट, यू कैन एक्सपोर्ट द डेयरी प्रोडक्ट।
तो ये जो चीज़ें हैं ये लोकली अवेलेबल हैं, ये चीज़ों इनको अडाप्ट कराएं पूरे कंट्री में। मैंने चीमा साहब से बात की थी कि यहाँ पे डिसीजन मेकर्स जो हैं रेलेवेंट, एक नेक्स्ट सेशन करवाएं एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैक्सिमम इंडस्ट्री को इनवाइट करें, अपने प्रॉब्लम बताएं, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही हैं, एनटीडीसी इंपोर्ट कर रहा है या कोई भी कर रहा है, जब तक स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे होकर बैठ के अपने आप को फिक्स नहीं करते, अपनी बेल्ट टाइट नहीं करते, हम इन मुश्किलात से नहीं निकल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अगर चिमा साहब एनटीडीसी के कुछ लोग इधर मौजूद हैं, टारगेट दे दें कि भाईजान इस पोजीशन के ऊपर आपको हमने 3 साल के लिए बिठाना है और आपने ये चीज़ें जो इंपोर्ट करनी है इनको सब्सिट्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ लोकल इंडस्ट्री, और अगर आप नहीं करते तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी। इसी तरह अकेडेमिया में जो बैठे प्रोफेसर साहिबान हैं उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें, उनको भी कहें जी एपी जो है ना वो एसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट आगे डीन नहीं होगा, डीन आगे वीसी नहीं बनेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा, अनलेस के वो एक टारगेटेड जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उनको सब्सिट्यूट नहीं करता। इसी तरह जिस बंदे को जिस पोजीशन पे बिठाते हैं उसको टारगेट दे दें कि भाई ये चीज़ आप इंपोर्ट हो रही है, 6 महीने का टाइम है, साल का टाइम है, जो भी हम डिफाइन करें उसके ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बना दें, तो उनको कह दें कि भाई ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर वो क्या होता है कि हम लोग, हमारे लोग जो है ना, जब तक हम लोगों ने अपने आप पे सख्ती ना की तो ये चीज़ें फिर इसी तरह ही रहेंगी, फिर हम रोते रह जाएंगे, फिर हम कहेंगे ये बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, फिर हम मांगने चल पड़ेंगे, चले हुए हैं, अब तो देता भी कोई नहीं है। तो हमने सब ने मिल के अपने जो मामला हैं इनको सीधा करना है। अब मैं भी 1 मिनट में ख़त्म करने लगा, अब तो क्लोज हो गया ये जी। हमने बस मैम से मैंने 1 मिनट लिया है, 1 मिनट के बाद मैं क्लोज करने लगा हूँ जस्ट। हाँ पक्का। अच्छा ये जी प्लांट हमने, मैंने बताया ना आपको, जब हमें गैस नहीं दी उन्होंने तो हमने खुद अपनी गैस जनरेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी गैस भी है, बिजली भी है। हमने अभी मेरा बिल आप नेट पे चेक करें तो मैंने 15 मिलियन लेस्को से लेना है इसी प्रेमिसेस का। ये सर वो टनल है जिसमें हम गैस स्टोर करते हैं। बस मैम देखो कितनी स्पीड लगा दी है, ये पीएमएस की है। हाँ बस ये हमारे लोकल मैन्युफैक्चर सारे बना रहे हैं। नहीं ये नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो कर रहे हैं काम वो तो बताने देना मुझे। 15 सेकंड रह गए। अच्छा बस 15 सेकंड में ख़त्म। ये जो है ना ये पीएमएस के एडवांटेज हैं ये। इसके बाद ये आ गया सर, बस इसके ऊपर कंक्लूजन है। इसके ऊपर मुझे 2 मिनट 1 मिनट दे, 1 मिनट मैम, 1 मिनट ये कंक्लूजन तो कर लेना। अच्छा ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट है चेयरमैन साहब, ज़रा मैम को रिक्वेस्ट करें कि मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। ये सर देखिए मैं सोल्यूशन की तरफ आ गया हूँ। अब कंक्लूजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी डिस्को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और मीटर मैन्युफैक्चर, ये एक थिंक टैंक बनाएं। मैं चेयरमैन साहब बैठे हैं इधर, बीओडी लेस्को के और मैपको के भी हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने मेंशन किया, मैम थोड़ा सा पीछे हटो, ये 6 जो लोग हैं इनका बोर्ड बनाएं। हम आपको सोल्यूशन देते हैं कैसे हमने मसाइल अपने हल करने हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे ठीक करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी अडाप्ट करनी है, हम कंसेंसस बिल्ड करें और इसके ऊपर हम चलें। और डिप्लॉयमेंट अभी ये सारा हो गया। मैं मैम जान नहीं छोड़ी तो मैं आप खुदा हाफ़िज़ कहने लगा हूँ। आपको थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपके सेशन को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया गया है दिल से, थैंक यू सो मच। तो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम दावत देंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने ना सिर्फ कानून की दुनिया में आला मुकाम हासिल किया बल्कि तवानाई के शोबे में भी अपनी कानूनी तजुर्बे और बसीरत से नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। जनाब बैरिस्टर इरफान मुनव्वर गिल, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद चैम्बर्स, इस्लामाबाद लॉ चैम्बर्स के मैनेजिंग पार्टनर और साबिका कानूनी मुशीर नेपरा के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपका शुमार माहिरीन कानून में होता है जिन्होंने तवानाई से मुतल्लिका पॉलिसी साजी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कानूनी इस्लाहात में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया है। सर बिल्कुल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज इंतहाई अच्छे स्पीकर्स आए, उनका वेरिड एक्सपीरियंस था और बिलखसूस हमें बहुत ही ज़रूरी था कि किसी तरीके से हमें लेजिस्लेटिव कवर जो है, लॉ है, इनैक्टमेंट्स हैं, उनके बारे में पता चले। तो हमने बैरिस्टर इरफान मुनव्वर गिल साहब को स्पेशली रिक्वेस्ट की। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बहुत साल जो है नेपरा के साथ रहे। ही वाज द चीफ़ लीगल ऑफिसर और द चीफ़ लॉ ऑफिसर। इसके बाद इन्होंने ऑप्ट किया कि ये प्रैक्टिस करना चाहेंगे
और बहुत अच्छी अपनी लॉ फर्म चला रहे हैं और केसेस तो अपनी जगह पे हैं। तो इन्हें इसलिए बुलाया था कि ये बताएं कि रेगुलेशंस में क्या गुंजाइश है, रेगुलेटर की ड्यूटीज़ क्या हैं, और रेगुलेटर जो है वो कैसे बिजली के चोरी के रोकथाम में इनैक्टमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है और किस तरह मदद कर सकता है। तो हाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इन हमाक के साथ सीरियसली इनकी बात सुने और इससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी। Assalamu alaikum ji. Chima Saab, thank you very much for the kind words. Bigger background, Chima Saab has already explained in detail. Since I have a background of working with like number of regulators like SECP, NEPRA for the last 12 years, so my key focus is on the regulatory structure, the what role the regulator can play in this scenario. Because I seriously believe that the traditional legal approach is not a solution to these issues. As I gave it, start with an example, like if in illegal abstraction case, if a distribution company goes to the police station, the SHO sitting there have like a murder case, head kidnapping case, he doesn't have time and the priority for these cases. So the right people and the right places, and that is, I believe, the specialized regulator that can play its role. Before we start, like a best regulatory structure like that, that is being built on like 4 cardinal principles, I believe. One is independence, coupled with that accountability, integrity, coupled with transparency. So like we talk about an independent regulator, but at that same time, we talk about the accountability of the regulator as well. So like if I am independent in taking a decision, I should be responsible for the consequences of that decision as well. Like I quote an example, example like BCCI crisis, international banking crisis. There, the governor's Bank of England was charged for being recklessly negligent because he could not take an action at the right time. So here, like in our scenario, like not like especially NEPRA regulatory structures, like we are mostly working in reactive mode, not in proactive mode. So like when a crisis occurs, like recently 2-3 blackout crises, like blackouts occur in Pakistan. So what we do, like after the blackout, we seek a report why blackout occurred. But before blackout, there is no proactive action. So especially with this topic in mind, I divide my discussion in 2 parts. Like one scenario is before 2018 amendment in NEPRA Act, and one after 2018 Amendment Act. Before 2018 Amendment Act in NEPRA Act, the Parliament passed, there was a traditional approach, like there was Section 38 and CSM Consumer Service Manual that deals with the abstraction of electricity. That's the typical way that the distribution company must approach the police station, register an FIR, and the detection bail criteria is given. That is a traditional approach. After 2018, that is, I believe NEPRA has yet to implement that. What Parliament has, I think that is a very balanced approach, because I was also the part of that committee that the law was amended. That NEPRA was, this task was specifically given to the specialized regulator NEPRA, that they must establish district level complaints offices to do what? Number 1, overbilling. Number 2, illegal abstraction of electricity, theft. So all these covers, like there is like when we talk about illegal abstraction of electricity, at the same time we should also talk about the overbilling as well, because they both both are interrelated to each other. What is, I think, required in this case, that if Section 35A that was introduced in 2018, if that is implemented in letter and spirit, the solution to this issue will be there. Over the years, like there are a number of amendments in Criminal Procedure Code, Pakistan Penal Code, in like other criminal procedures that to enhance the penalty, to give more powers. That didn't work, because the session, with due respect, the session judge sitting there, he does not know actually the technical details and the technical issues involved in the transaction.
He's doing a murder trial. The next case is that the person accused is placed before him that he actually did like he had a whole connection. He simply said that is not a case. Like I'm doing murder trial and you say this is a priority case. It can never become a priority case for the session judge. So the right approach that the parliament has changed in 2018 that there should be complaints offices in every district, and the specialized people specialized in the sector shall look into that matter and fix the responsibility. What actually the parliament did through that section, like if there is a case of overbilling, they must establish the responsibility of the officers of the distribution companies. Because a distribution company is always a very responsible entity. It doesn't do the overbilling. There are people everywhere who collude with each other and do the overbilling. So at one hand, it had given power to NEPRA that they will fix the responsibility, like there are two persons involved, and if they think that the offense is very severe, they can approach the session court for the 3 years imprisonment plus 10 million fine. And if there is another case that the consumer is involved, there's similar penalties imposed on the consumer as well. So I believe that from traditional legal approach to say regulatory structure, that is the solution to this issue. Professional regulatory structure that is in place and that has the capability should act and actually should implement that section, and this issue can be resolved forever. This is the core of, because over the years like of my working in the NEPRA, I have seen what as a regulator we used to do, that we used to seek report for distribution companies, like there are like 100 theft cases, what actually you did? How many FIRs you registered? They said we approached SHO for under they registered 90 FIRs. They actually did their job, but that actually solved the problem? No. FIR registered, nothing happened after that. So this goes on, and the problem is actually complicating with every day. So that traditional approach never worked in like my 12 years, like Rashid Khan is sitting here from NEPRA, he will actually second that, like that traditional approach never worked and will never work. Actually, there is a need to move towards the regulatory enforcement mechanism. A regulatory enforcement mechanism is actually the solution to all these problems. That's my all discussion about this. Thank you very much. अब साहब ने अब जाना भी अब जल्दी है, तो इसलिए मैंने इसको briefly कर दिया जो मैं क्रक्स था लाइन था उसका. कोई question answer, कोई question है I'm here to answer. सर इसमें चीमा साहब बेसिकली ये है कि नेपरा ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ के मुताबिक कंप्लेंट्स ऑफिस एस्टेब्लिश करने हैं. दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेपरा एज पर सेक्शन 35A. In every district there will be complaints offices, there will be sitting officers sitting specialized in that field will be sitting there. Any consumer and distribution company can file a complaint with them. If a distribution company thinks and believes, have an evidence that the consumer is doing the theft of electricity, they can approach the complaint office. And similarly, the consumer is of the view that he's being done overbilling, he can approach it. So what they do, they actually go for a detailed investigation of the issue. Like, because the technical people sitting there, they will check the record, everything, technical data, and then they will establish. If they establish that that's the first scenario, that the overbilling is being done, then they will fix the responsibility of the concerned officers, employees who are involved. 1, 2, 3, 4. They will fix the liability and impose the penalty accordingly. And then in other scenario, if distribution approach that office and that complaint office of the view that actually that the consumer is guilty of theft, they will actually determine the amount of theft, that actually how much electricity stole, and plus the penalty of 10 million. So that is how it will work. And for that, NEPRA has to establish the procedures that they still yet to establish. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो जनाब, अब हम तकरीब के उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां हमें आज की इस इल्मी और फ़िक्री नशिस्त को बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है.
इस अहम मौका पर मैं दावत दूंगी एक ऐसी शख्सियत को जो ना सिर्फ बसीरत, क़यादत और इदाराजाती तरक्की की अलामत हैं, बल्कि लेस्को और मेपको बोर्ड्स की रहनुमाई में एक नई जहद का इजाफा भी कर रहे हैं। वेलकम करते हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनाब आमिर ज़िया साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इंजीनियर ताहिर बिशारी चीमा साहब, फेलो मेंबर्स IEEEP पाकिस्तान, सामीन, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स, अस्सलाम वालेकुम जी, ख़वातीन हज़रात। We are actually at a crossroad at this point in time. A crossroad where we really have to understand कि हमने आगे बढ़ना है या हमने लेगेसी को लेके चलना है। इतना रिजॉल्व, इतनी क्लैरिटी, I've been in the power sector for almost like 35, 36, 37 years professional life. I've not seen so much of a clarity in terms of what we really want to do at the policy level that I've seen at this point in time. बहुत convergence है from the government side, बहुत resolve है from the government side. The Honorable Prime Minister of Pakistan is very clear कि हमने ये जो power sector के मसाइल हैं उनको बहुत transparent तरीके से हल करना है. We get a lot of support from the ministry. Probably this is one of those very rare occasions that the Joint Secretary of the Ministry was actually standing at this podium. Only, यार ये आवाज़ ज़रा पीछे से बंद करवा दें please. So once we took over, that was, and incidentally, this is exactly 1 year. The new boards that were constituted about a year back, and that happened to be on the 24th of July 2024, and today being the 25th of July, exactly 1 year that I'm standing here. I also remember that probably about 3 to 4 months back, there was another seminar which I happened to attend with Cheema Saab, again trying to understand how can we resolve the circular debt problem, how can we improve and the support that we have gotten from the government, the support that we have gotten from the ministry, I can tell you with full confidence that boards are extremely independent. I think that is the first step, the cornerstone for any change that you really want to bring in. As I stand now, I'm very happy to announce, or very happy to present that the performance of the 5 discos of Punjab, that has been perhaps the best that was ever recorded in the history of this country. The 3 discos which are going to be privatized, they actually beat the targets that were given by NEPRA, and they performed better than that. The 2 discos where I and myself, both Cheema Saab, are a humble member of, we actually created history, sir. For LESCO and MEPCO, both, we recorded improvement in a very transparent manner. No hanky-panky, nothing of any sort, of numbers that we could not have thought of. We recovered more than 100%. What happened actually was there was a uniformity of the resolve that yes, we have to bring in some change. And I take advantage at this point in time that I really want to applaud all those, at least I am aware of the 5 discos of Punjab. I really want my champions to stand up.
the CEOs and the management and the officers of LESCO and MEPCO and ISCO and GEPCO and FESCO, if they are here, I really want to applaud them for the remarkable achievement they've been able to do this year. Yes, sir. So, I am thankful to God Almighty that Allah Ta'ala ने ये मौका दिया कि इस पोडियम पे आके मैं उन साहिबान को और ख़वातीन को recognize कर सकूँ on behalf of the board which have done this. And I hope कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका मुझे दिया, हमें मौका दिया, तो probably जब next time हम मिलेंगे तो हमारे जो partners हैं, जो manufacturers हैं, हम उनके लिए भी खड़े होकर इसी चीज़ से तालियां बजवाएं कि जी कि they are the ones who have actually made this happen yet again from a very different forum. That forum being कि हमारी quality, हमारी quantity, हमारी reliability और हमारी availability इस level की हो कि जहाँ पे हम दुनिया के किसी भी entity के साथ मुकाबला कर सकें. So that is what the intent is, जी. And I hope that we will be able to do that, जी. I see, माशाल्लाह, probably ये side सारी engineers वो हैं जो कि utility side की है, ये side सारी जोन सी है predominantly वो side है जो कि manufacturers की है, so वो थोड़ी सी जोन सी है वो मियाँ साहब जोन से हैं वो थोड़ा सा बगावत कर गए हैं यहाँ पे. But nevertheless, but honestly speaking, sir, वो I believe in two principal phenomena. One is the sequencing of people, process, technology. जब तक आप इस सीक्वेंस को इसी सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे तो आपकी चीज़ें जो सी हैं वो हमारी प्रॉब्लम ये बनती है कि हम टेक्नोलॉजी पहले लेकर आते हैं, फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि उसके साथ कि जब करें क्या, और सबसे बाद में हम उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तलाश करते हैं. तरीक़ेकार जो है वो इसके बैने ऑपोजिट है कि जी यू नीड टू फाइंड the right people first, lay down the processes, and then bring in technology so that there's a sustainability element associated with this. हमारे एक और भी मसला है कि हम वो तीन relationship की parameters होते हैं कि you are handshaking, you are hands apart और you are hand holding. हमारी जनरली रिलेशनशिप जो सी होती है या वो हैंड्स अपार्ट होती है या हैंडशेक होती है, जिसका मकसद ये होता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ हाथ मिला लूँगा, जब तुम्हारे साथ ज़रूरत नहीं पड़ी कि तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे पास, मेरे हाथ मेरे पास. We really want to go into a relationship with the manufacturers, with suppliers, with our own environment in a hand-hold environment. We can't survive without understanding this basic principle कि मैं आपके बगैर survive नहीं कर सकता, आप मेरे बगैर survive नहीं कर सकते आके. अगर इसको हमने एक sustainable model के तौर पे लेके चलना है तो ये relationship और वो कहते हैं ये एक leap of faith हमें लेनी पड़ेगी आके. So this is the leap of faith that at some point in time we really will have to take. So going forward, I think one thing that is a reality now is that we have had a lot of transitions, we've had brilliant presentations since morning, but one thing that's, I think, is a complete resolve at all ends is that we have to go smart. We have to go smart and we have to go transparent also. And smartness और transparency की जो आजकल की definition है वो ये है कि मेरे पास data जो है वो real time available हो और उस डेटा की रियल टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीजंस भी ले सकूँ आके. एंड एट टाइम्स इवन दोज डिसीजंस हैव टू बी ऑटोमेटेड. हमने AMI इन्वायरमेंट का जिक्र किया, हमने स्मार्ट मीटर्स का जिक्र किया, हमने और बहुत बड़े जो उनसे मुश्किल अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए. एक फिनोमेना मैं भी ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है ADMS, विच इज़ एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपकी जितनी ग्लोबल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्मार्ट मीटर्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपका GIS भी आ जाता है, जिसमें आपका ISU भी आ जाता है, जिसमें बिलिंग इंटीग्रेशन भी हो जाती है, जिसमें कस्टमर सर्विसेज भी हो जाती है,
जिसमें कॉल सेंटर इंटीग्रेशन भी हो जाती है और जिसमें आपकी क्रू मैनेजमेंट भी आ जाती है। सो वो एनवायरनमेंट जो सी है वो बिट्स एंड पीसीज में कहीं ना कहीं पे मौजूद है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स समथिंग विच प्रॉब्ली इन बिट्स एंड पीसेस, कुछ कहीं पे है, कुछ कहीं पे है, कोई कहीं पे है। दिस इज़ प्रॉब्ली जस्ट द राइट टाइम कि वी स्टार्ट वर्किंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जी कि वो जो मेरी अल्टीमेट गोल है, जहाँ पे मेरे पास एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट हो, मैं उसको कैसे लेकर आऊँ और मुझे क्या करना है। उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। GIS इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्मार्ट मीटर्स इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक, ISU इंटीग्रेटेड बिलिंग सिस्टम जो उनसे आपके हैं, जो डेटा भी लेके चल रहे होते हैं, दैट्स येट अनदर बिल्डिंग ब्लॉक। कस्टमर केयर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है इन डिस्कोस, दैट्स येट अनदर बिल्डिंग ब्लॉक। सो ये सारे जब एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, उसका सोल्यूशन ये निकलेगा कि आपके पास इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट काउंट, होपफुली इंशाल्लाह। Luckily enough for the 2 discos that I am a part of, our business plans now speak of these things. Our investment plans have now started talking. We understand the roadmap that we are going to take for the next years. हमारे KPIs, हमारे benchmarks, हमारे turnaround times जो उनसे हैं, वो अब इस चीज़ की बात नहीं करते कि मुझे नहीं पता कहाँ से करोगे आके। हमारे जो KPIs, benchmark, turnaround times हैं, या जो भी benchmarking आप कहते हैं, they demonstrate the activity through which there will be a advantage taken, translated into some kind of an improvement through a KPI. So this is the transition that is happening in these discos. I am hoping कि इंशाल्लाह probably अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अगले साल अगर हम इसी किस्म का एक सेमिनार दोबारा करें, so we will be able to demonstrate कि जी कि हम कितनी changes कर चुके हैं आके। Smart meters एक reality है, APMS उसका एक हिस्सा है। We are very, very sure that this is what we want to do. Data integration जो सी है, that's one thing that's going to happen. Discos जो सी वो अपने data centers बना रही हैं इस वक्त. We want to become our own owners as well. It's about time that we start doing it. We will start ERPs हमारे system में लग रहे हैं आके, कुछ modules जो सी ERP के लग गए हुए हैं, कुछ modules ERPs के आ रहे हैं इस वक्त. But hopefully, given time, not very far from now, these discos will be probably the best possible utilities that you can really think of, with one singular eventual goal, and that being that I have to serve my customer. And I have to serve my customer in a manner that is befitting for him. So hopefully, inshallah. But once you go into so much of complicated environments, so there are opportunities, of course, but there are threats as well. जी जो सुबह आज तक की जो वो क्या कहते हैं महवे डिस्कशन जो एलिमेंट रहा है वो यही रहा है कि जी के how can we smartly and intelligently control theft of electricity, and this is but yet again a new reality that वो ये cat and mouse situation जो सी है वो हमेशा से चलती रही और हमेशा चलती रहेगी कि it's not कि जी कि this is the first time it's happening. जिस ज़माने में हमारे डायल टाइप मीटर्स आए थे उस ज़माने में मैग्नेट लग गया, जिस ज़माने में स्टैटिक मीटर आए उस वक्त कोई और इंटरफेरेंस शुरू हो गई, and of course अब जब स्मार्ट मीटर्स आए हैं, so there is another technology that actually is playing negative to this environment. But honestly speaking, this should not be a deterrent for us. It can't be a deterrent for as long as we understand that we have to find a solution to this. As long as we understand that I have the capability and I am in unison with the service providers, that being the utilities, that there has to be an answer and we have to find a solution. We are developing our AMI centers. It's not that कि हम इस वक्त चुप करके बैठे हुए हैं. We exactly know what needs to be done. हम data की management भी कर रहे हैं, हम data की abnormalities को भी देख रहे हैं. It will take a bit of a time, but yes, we are there. We will be there, inshallah. But at the same time, I'm taking advantage from the fact that we have the manufacturer sitting over here. Sir, I really need your support here. We really need the support in trying to understand how we can come to a smart, intelligent,
and a doable solution. I am pretty sure that the kind of resources that you gentlemen have, Mia Saab has, मेरी और आपकी सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका कोई ना कोई हल तलाश करें. अगर नहीं कर पाएंगे आके तो लाइक आई सेड अर्लियर कि जी कि वी आर एट अ क्रॉस रोड. टेक्नोलॉजी का फ़ायदा या नुकसान यही होता है कि जी या तो हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लेते हैं या हम उससे इतना ख़ाइफ हो जाते हैं कि फिर हम उसकी बात दोबारा नहीं करते. सो लेट्स नॉट गो इनटू ए फिनोमेना कि जहाँ पे कि ये टेक्नोलॉजी की जो एब्यूसिव साइड है, लेट्स मी पुट इट लाइक दैट, that overpowers the goodness of the technology. Honestly, I enjoyed this today's session, thanks to IEEEP and with the Ruhr Awam being Tahir Bashar Cheema Saab. मैंने गलती से जिक्र किया था उनसे, and he jumped on this and he said that this is probably the need of the hour. I was hoping कि अवैस लगारी साहब ज़रूर आते इसके अंदर या उनकी Zoom meeting होती, and he actually tried desperately to join us this seminar either physically or through Zoom, but there were reasons for which he can't, but he did message me and he actually was very, he regretted not being here today, but he did say कि जी कि we will really want to see कि जी कि the outcome of this seminar translated into some very concrete, actionable items, translated into some timelines जी. हम concrete ideas ले आते हैं, उनके concrete ideas को फिर हम चलाना शुरू करते हैं, but हम उनको timeline नहीं करते. And I think the most important thing for every bright idea, brilliant idea is that it should be timelined in a manner that उसके जो benefits हैं हम उनको जितनी जल्दी reap कर सकें आके. APMSs हम लगवा रहे हैं, sensors भी लगवा रहे हैं आके उसके ऊपर, and that's an irony कि जी कि मेरा जो principal transformation point है 11,000 से 400 वोल्ट का, उसका आज तक मैंने ख्याल ही नहीं किया था. It's an irony, हम साल के कोई 20 से 25 अरब रुपए के ट्रांसफार्मर जलाते हैं, और ये वो ट्रांसफार्मर हैं जो कि रिकॉर्डेड होते हैं. जो रिकॉर्डेड नहीं होते और वो जो गली के नुक्कर में वो जो लोहे वाला जौन सा है वो उसकी वाइंडिंग चेंज करता है और कढ़ाई में जौन सा उसको तेल गर्म करता है, उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है. दिस इज़ द काइंड ऑफ, ये सारी की सारी जो एब्यूसेस हैं उसको हम बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं इफ़ वी अंडरस्टैंड, इफ़ वी हैव द रिजॉल्व कि जी कि हमने इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करना है आके. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सच इंटेलिजेंसिया gathering together. We had some very good thoughts coming in. We have good ideas. We will keep on pondering on these good ideas. We'll continue to take benefit from this. But one thing I will again request कि जी कि let's for once come to this understanding कि जी कि this is probably the time where we really have to be all sitting together and to find a solution to this. I think कई दफ़ा ये बात की गई है कि जी कि इस मुल्क की अगर शाहराग है तो वो बिजली है, और अगर उस शाहराग का मैंने सैंक्टिटी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो ये मेरे ख्याल में बहैसियत मुसलमान कह लें या जिस भी रिलीजन से मैं हूँ, ये मेरे और आपके ऊपर लाजिम हो जाता है कि हमने उसकी हिफाजत करनी है. सो आई विद दिस आई होप कि इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स निकलेंगे, and then we'll be able to translate them into some very meaningful and quick actionable items. Thank you very much, sir. God bless you all. Thank you so much, Chairman, Board of Directors, आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मैं साथ ही स्टेज पर दावत देना चाहूँगी IEEEP के प्रेसिडेंट इंजीनियर ताहिर बशारत चीमा साहब को कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं ताकि हम सर्टिफिकेट जो हैं वो तकसीम कर सकें. प्लीज़ वेलकम इंजीनियर ताहिर बशारत चीमा साहब.
तो मैं सबसे पहले दावा देना चाहूँगी लेस्को के रूहे रवां CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब. Please welcome to the stage and receive your certificate of participation. Next is, sir, please stay on the stage. Next है जनाब बैरिस्टर मोहम्मद असगर खान साहब. वो यहाँ पर नहीं है. ओके. खालिद खान साहब. He's not also okay. जनाब आतिफ शहजाद साहब. He's here. Please welcome, sir. आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप लोग नहीं थके अभी तक. Mia Sultan Mahmood Sahab. Please welcome. Everyone enjoy your speech, sir. Thank you. Thank you, sir. Please welcome all manufacturers companies. ये आप लोगों के स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने आप सबको सपोर्ट किया है. आप भी इनको सपोर्ट कीजिए. प्लीज़ क्लैप फॉर देम. थैंक यू. ले लिए. नेक्स्ट है हमारे पास बैरिस्टर इरफान मुनव्वर गिल साहब. प्लीज वेलकम टू द स्टेज. नेक्स्ट मैं बशारत चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आमिर ज़िया साहब को शील्ड, प्लीज़ सर, सोवीनियर शील्ड दीजिए. शील्ड पेश कीजिए. सोवीनियर सर. नेक्स्ट आमिर ज़िया साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ताहिर बशारत चीमा साहब को प्लीज़ सर्टिफिकेट पेश करें.
थैंक यू एवरीवन। आज के इस कामयाब सेमिनार का इख्तिताम तो होता है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लेस्को के तमाम ऑफिसर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लैप फॉर योर सेल्फ, फॉर योर देम सेल्फ प्लीज़। मैं एक नाम भूल गई, उसके लिए माजरत। इस इवेंट को कवर करने के लिए जो टेक्निकल फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिस टीम ने, उनकी तरफ से सलीम नूर साहब, प्लीज़ come to the stage and receive your certificate. आगे कहाँ हैं? आप ही हैं? लो सर। तमाम जितने भी डिस्कोर्स हैं